प्यार हर खुशी प्यार हर नहीं प्यार हुस्न का आया है यही तो है ना। प्यार धोखा है प्यार कष्टी है प्यार तोड़े दिल एक दिन। प्यार प्यार कष्टों की मेरा निशानी है प्यार से दुनिया है। न प्यार करना है कि जरा 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 जो भी होश हो हमें प्यार का हुआ जरा फिर चाहे जो हो। जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई एम स्टार्टिंग अप एवरीथिंग। और मैंने बहुत ही मस्त सा काम किया है आज, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। I'll show you. It's not done yet. I'll be doing that just first. Let me set up the Discord. Mm, yeah. Mm, okay. Where is my chat? Chat, yes. Yeah. Okay, so I have actually done the global exception handling, and yesterday I stopped the stream in between. The reason was I was trying to figure out what's the ideal way, correct way to implement the global exception handler. So I got the idea what to do. So I'll just close other tabs. Yeah. So this is the single global exception handler that we need throughout the project, and it is working very beautifully. I really like the responses coming out of it. What I did, I implemented this API error response, which is the standard error response. Plus, it has validation errors as well. And first, let's talk about the validation errors. It is the validation errors for each and every field, the input that we are going to take from the user. I'm actually applying these validations on this inputs. So for example, take this email as a first example. Email is a field which is always required because it is a required field in our database as well. And then it will give the user the same message if the email field is empty. So let me show you this. And there is one more, email is required. So array, I'll show you this in the postman. Okay, so where is the postman? Postman, login, yeah. Mm, it was for the register, you know. So in the register one, if I go and just do this, remove the email completely, and let's see what will happen. So we are getting, oh sorry, we are getting this error response. The timestamps when the error is occurred, exact timestamp. The status code is 400. That means a bad request. So it is a bad request. Error details. So error is a validation failed, and message validation failed for one or more fields. So it means it is a validation failed error, and that means a validation error object will not be empty. So people are not liking this whatsoever. Okay, so meanwhile, if there is no one, I'll just resume my work. So there is this thing. I don't think people are enjoying this stream that much, even though it's fine. I'll go and like my own stream. I don't care if others are liking or not.
So yeah, I like my own stream, no worries. The question I asked to it is that do we need a custom exception? No, we don't. It said the filter exception gotcha this. How to handle this robustly? There are two errors after a silent follow. Instead of letting the filter throw an exception, you wrap JWT exception. If the token is expired or invalid, you catch the exception, log it into the skip, add it, and simply not authenticate the user. Spring Boot security filter chain will explicit custom JSON. What does it mean? You catch the JWT exception inside the filter and write a formatted JSON and directly. So which one should I follow? There are two error handler things that I'm left. One is how would I handle the JWT service exceptions, like exceptions inside JWT service. And second is, what if uh, any new error comes up and it gives us the any other uh, exception. So we need to handle that. So these two things are like left. So to do, and I'll figure out the first silent fallback among these two. Which one is the standard? Why the approach is industry standard in a secure REST API? You have two types of endpoints. Private endpoints and public endpoints. The big architecture flaw of approach B. If you use approach B, instantly returning token expired JSON error with the filter detects invalid token. If a user has an old token expired token saved in their browser and visits our public register page, filter will interrupt. Okay. This can happen. So approach A it is then. So again, guide me in implementing approach 1. So we'll go with the approach 1 here. How? Because see, our other services has this error handled now. For example, take this user service. User service has, we have created few exception like email already exists exception, user not found exception, and account disabled exception. So where are we throwing this? In this one, we are saying if create an user, if user already present, then we'll throw email already present exception. So nobody is caring today what I'm trying to say here, but this is a very good level of project that I have reached right now. Maybe you guys will not understand at this moment, but yeah, once I do the front-end integrations, then for sure you will understand this. Okay, so is there people sleeping in this Discord? Was talking to. Hey,
Where is that chat? I have been removed. What is this? No, bro. Is there something off in the Discord? Let me check. What's happening to the Discord server? Something is wrong in the Discord. हेलो 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 ब्रो थॉरफिन। डीसी डाउन था। पता नहीं यार क्या हुआ। डीसी डाउन। वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि रिमूव रिमूव तो नहीं कर दिया है। आई डिडंट रिमूव। मेरे को इतना डिस्कॉर्ड आता भी नहीं है चलाना, टू बी ऑनेस्ट। कैन यू सी माई मैसेजेस थॉर? आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू हियर मी। आई एम टेक्सटिंग यू। कैन यू सी द मैसेजेस in the Discord? Raj, if you are still there, let me know if you can see the messages in the Discord. I'm having some doubts because Meet texted me. He is not able to see any messages in the Discord.
Earlier everything was deleted, every channel and all the messages. I deleted few messages from the Arcane. It was like auto putting some messages, so I didn't like those. I deleted the Arcane messages. So did that uh, did anything wrong in that? Yes, Sam can. Okay, fine then. Now you can, then it's fine. Let me make you someone who knows, someone admin to that group, no? Someone who knows Discord. Do you want to be admin of the Discord, or I can make me, because I don't know much about Discord. Okay, no worries. So see, this is the error handling that I've. It's fine right now. Yeah, I hope it stays the same. These validation errors I have added. So if I undo this and I try to add a make a moderator, whom to you make moderator किसको moderator बनाऊं? If I give invalid email address, then it's giving please provide a valid email. So this is working very perfect. It will not look good in the API response, but it will look really good in the front end side. I have implemented this this kind of thing many a times, and everybody freaking loves this. Make a moderator. किसको moderator बनाना है? Mm, okay, we need to implement this thing. कहाँ था मैं? इस चक्कर में मैं भूल गया. ओपन, हाँ फिल्टर में अपने को, नहीं नहीं फिल्टर में नहीं करना था यार अपने को. Option A was silent fallback. Instead of letting the filter throw an exception, you wrap the JWT extraction in the try catch. Hover on my message. Oh, moderator को hover on my message. Oh bro, ये कैसे किया तुमने? Moderator को बनाओ. Oh, it translates the message. White translation diabolical. Yeah. This is cool. अच्छा मॉडरेटर को बनाओ एडमिन, यू आर सेइंग दिस. मॉडरेटर गायब ही है आजकल. दिल्ली जाने के बाद ही हैज चेंज्ड. ओके, ये मैं नहीं समझ पाया क्या बताना चाह रहा है. इंस्टेड ऑफ लेटिंग फिल्टर थ्रो एन एक्सेप्शन बट देन अगेन डू इट इन द ऑटोमेटिकली हो रहा है. कैसे कैसे कैन आई डू दिस? ट्रांसलेट दिस. कुछ तो ट्रिक लेके आते. नहीं नहीं मेरे इसमें नहीं है भाई, तुम्हारे इसमें. Maybe he made me. Maybe he made me this girlfriend after going to Delhi changed. अरे हिंदी में लिखो फिर होगा. ओ अच्छा, हिंदी में लिखने से होगा. सी. ओ नाइस. दिस इज कूल. Darkest. After going to Delhi changed. Bro, check the Discord, no? Why you are facing problems? Meet. I deleted few message from the Arcane. Is that I thought it's creating some issues. अरे ऑटो ट्रांसलेट हो रहा है. या अंडरस्टूड. Okay, let me understand this quickly.
सो सिक्योरिटी फिल्टर, फक दैट, आई जस्ट स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन जो इसने बताया मेरे को. सो JAuth फिल्टर में जाके ये बोल रहा है कि do internal filter, do filter internal method, and in this one current code modify and wrap it in the try catch. Now I don't know what to do. मतलब क्या हुआ मीत? This moderator does not understand. ब्रो, इंग्लिश यूज करके हिंदी में कुछ लिखो तब वो जाके आएगा. Try catch an exception message. Okay, and keep the filter chain invocation outside. Ensure that filter chain to filter is outside try catch. Let's go now. I can see that. Okay. मित, तुम्हें डिस्कॉर्ड चलाना आता है क्या? I'll make you admin there. जो क्या कर रहे हो जाने. We will just show you. बस आपको दिखेगा मे बी वो. Yeah, I'll show you. See this. कहाँ है ये ट्रांसलेट? ये मॉडरेटर नहीं ना करता अंडरस्टैंड. दिस मॉडरेटर डज नॉट अंडरस्टैंड. बहुत ही अलग मीनिंग बना दिया है. Whenever you write in some other language other than English, let me try in Marathi. What is this मंडली? मराठी नहीं डिटेक्ट कर रहा. मॉड होता है एडमिन, बट इट्स ओके. ओके. या ठीक है भाई. एडमिन मैंने रोल बनाया, अगर मैं दिखाऊं तो आई हैव क्रिएटेड वन एडमिन रोल जस्ट नाउ. देयर इज अ एडमिन रोल. I'll ask this, can you implement this for me this time, because ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है. नजरें मिलाना, नजरें चुराना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. I'll commit these messages. Implemented global error handling, global exception, no, global validation handling, and added custom exceptions. Okay, so commit. या चलना, commit कर. commit भाई, commit. select files to commit. अच्छा, it selected, and then what it's saying, I have successfully implemented the approach. Okay, let's see that. But first let me push this, git push. I don't know my code. Mod happens. I don't know my code. Merge conflict तो कुछ था नहीं वैसे. मेरा कोड नहीं ना फटा. अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोड नहीं फटा. मैंने एक्चुअली उसको रिस्ट्रक्चर किया. सी, प्रोजेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही गलत हो गया था, क्योंकि हम बस कोड लिखते लिखते जा रहे थे. देयर वाज नथिंग दैट वी वर डूइंग. हाउ वाज द राइस टफ, आई मीन द यूआई विच आई मेड. या इट वाज गुड. नो, उस पे हमने रिव्यू दिया ना. इट वाज नाइस. बनाते जाओ तुम आगे ना, पता नहीं कब क्या फट जाएगा, लेकिन मतलब फट जाएगा एज इन यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू. सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आई गेस एट दिस पॉइंट तुम्हें वो पसंद आ रहा है वो सब चीज़ें.
You are trying your own niche. See, I have done the project restructuring. Your base entity was in common and there than that. सब फोल्डर्स के नाम कैपिटल थे तो मैंने स्टैंडर्ड चीज़ें देखी what are the standards to follow. So I have fixed all those issues, like folder names are correct. Then there were some response entities that I created. Those were in some different folder. I have moved to this here. uh, और क्या चेंज किया. फिर ये exceptions handle किए. There was nothing that exceptions were present, so I handle. See, global exception, I'll tell you how this exception bubbling is happening. It was crazy, brother. Yeah, it was actually crazy. So I'll tell you how these exceptions are working. Okay, so I have created a one business exception. Okay, this is the main business exception. We will use it everywhere, and it is another class. It is an abstract class, and it extends a runtime exception which is given by the Spring Boot. Okay, Spring itself. So this is a checked exception. So in this one, I have this variable called HTTP status. So we will by ourselves will know कि कौन सा HTTP status है ये particular वाला. So this is a variable that I have created. Then there is a simple constructor. In that constructor we will send a useful message in that, and then the status code. Okay, this is a getter method for this one. Now coming to the exception that will extend this one. I used AI for fast work and it messed up the layout and stuff. It is true that AI 3 minutes coding and three. Yeah. AI मैंने भी नोटिस किया. AI को AI के हेल्प से बनाते जाओ ना, कुछ भी बनाते जाता है. अपने को we have to always keep an human eye looking at that what's going on and what's not. Now this email already exists exception, so it is another class which extends our business exception, and we are sending in the constructor we are sending this message to super, like to the business exception, and which will at the end go to the runtime exception, and runtime exception will be cached through global handler. So the message is simple. The email address is already registered. What is our that is what our exception says. Email already exists exception, and if this is you, please try logging in or resetting your password. It is a standard message, and the HTTP status code is conflict. That means 409. So that error code will be thrown. It is very simple. I have made it very simple and very sophisticated, so that you have to give a very specific prompt, brother. Only then he give. Yeah. Prompting is very much required. The more detailed prompt you give, the more detailed code you will receive. The more vague prompt you give, a more vague uh, answers you will get, the code you will get. I have done one good lecture on like prompting, how to prompt very well. The most important thing is like you always try to mention the role in that. Hi bro, I have understanding of backend development, that is in Nest JS and Node.js, Postgres, MySQL. How to become pro in backend. Also, what to learn and understand next. If you have you have understanding of backend development. I thought you have experience of backend development. So this is what, bro. You can follow what I'm following. Make projects, like create projects in the technology that you wanna work in the future. So for you, I can see Node.js and Nest. Nest is inside. There is no Node.js only. So Node.js is your forte technology. So go with that and try to create uh, different projects, good projects on that, and that's it. You can how to become pro in backend. And creating project, just not that, you have to follow LLD for sure. मतलब जब भी you create project, try to follow the standard guidelines from that, because nowadays writing code is not a big of a deal. You have to follow the standards. And then there is a system design. You should understand system, how your complete deployment, how your see, being a backend engineer is not just writing code. Writing code for the backend APIs is just 10% of what a backend engineer is doing right now. Backend engineer is also
writing YML pipelines sometimes, also deploying the code, managing the databases, okay, managing the server, sometimes if required, doing the caching in between, caching of the data, and most important is the response time. Response time is what your goal to have like the best response time. So for that, whatever you need, you have to design that system. Yeah, I have worked in internship under the tech mentioned above in CRM and CMS. CRMs are the best tool to get understanding. My first project was also a CRM that I built. Yeah, so if your internship is done, are you applying for the jobs? Why? But it consumes too many tokens. Guys, this token वाला issue no. अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टोकन है तो ट्रेन द चैट दैट यू आर चैटिंग इन to give the limited response. So make it like talk in very rude language. So that don't use if and buts. Don't polish my answer. Just give the answer in 3 to 5 lines. Say use that in the prompt, and it will give you short prompts because you know the tokens is not only counted for the prompts that you are writing, but the responses that you are getting. So token is calculated on all the things combined. I also created one extension for my office in the for my office work where my prompts get shorts and then I use those prompts to save tokens. I use ChatGPT bro with free go plan for 1 year. अच्छा ये मैं मिस कर दिया था ये वाला offer. How did the internship go? Apply this much here then it is working. Apply this much here कहाँ पे? मेरे पे तो अनलिमिटेड है स्टूडेंट डेवलपर पैक तो मेरे को दे दो यार स्टूडेंट डेवलपर पैक है तो that's it and how much more will you burn me it is still continuing but I don't want to it is still continuing but I don't know what to do next. Bro, keep applying for the Node.js backend jobs. Now that I'll tell you I know where you are confused right now. You have currently experience of Node.js development that I'm just saying Node.js for now. So create your profile on Naukri, create your profile, update your LinkedIn profile, and start applying at least 30 jobs a day. If your goal is to, I'm assuming that you want to do a job in good company. So do that and start applying to those jobs and mention in that you are an immediate joiner if you are an immediate joiner or can join in next 3 to 6 months, then still mention immediate joiner and start giving the interviews. Bro, drop tips how you get internship. Yeah. So जब तक you have to like fail in 4 5 interviews, then only you will actually understand तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है, what you actually want to have to study, and then you can study. So always पहले 4 5 इंटरव्यू भगवान के नाम पे ही होते हैं. Those interviews will give you the strategy to study actually. So that is what I follow. जब भी मैं इंटरव्यू प्रोसेस देना चालू करता हूँ, so I give interviews just to check what the market is asking right now. Every new year market asks for some new things. It's not what companies used to ask 5 years ago will ask now to while hiring a new candidate. It's not. Every year the things are changing. So just try to give as many interviews as possible as early as possible. It will give you a best strategy to study by yourself. किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं. इंटरव्यू में तुम्हें जेएस कोड पूछेंगे, जावास्क्रिप्ट के नाउ दैट यू आर डूइंग नोड जेएस तुम्हें इवेंट लूप्स ये सब चीज़ें पूछेंगे. जावास्क्रिप्ट कोड लिख लिख के दे विल आस्क यू अबाउट द आउटपुट्स. So you should learn the JavaScript concepts like hosting वगैरह ये सब चीज़ें you should know कि when variable is declared. ये सब confusing questions पूछेंगे first round में तुम्हें low level company और mid level company. And then somewhat DSA problems also small, not heavy DSA problems, but array based छोटे मोटे JSON object manipulation kind of DSA problems that they'll ask.
And the third thing is you should be aware of the project that you have worked on completely. So get the तुम्हें मजा नहीं आ रहा internship में that you said, but take the advantage. Explore your project that you are working on. चार्ज जो co-pilot है उसमें तुम पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट बना के ले लो कि एक्सप्लेन मी दिस प्रोजेक्ट एंड टू एंड. अगर तुम्हें पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो गेट द आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट. एंड देन नेक्स्ट वो प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट शुड बी द प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन, और इंटरव्यू पूरा उस पर ही होना चाहिए. तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आस्क सो prepare your project very well so that whatever the interviewer may ask from your project, you should be able to answer those questions. He's वही पीपीओ ले ले भाई. अरे he is saying he got bored in that company, that's why he's asking this question. Maybe he didn't like the company, or maybe he want to work in some better company. I hope you got your answer, or somewhat got the answer, not completely, maybe at least you got an idea what to do. Rishi, what's your name? Chaudhary. Rishi Chaudhary. Okay, Rishi. या मैंने ऐसी हवा में बकवास की. Okay, back to the work I was doing. Then we also want to be bored. सबका बोरिंग फेज अलग है भाई. In the internship there is a mixed things, like somewhere requirements are to be added in the larval. Also, I also understood and optimized GPT and Gemini APIs for their AI dashboard. This is good, no? There is a mix of things, like somewhere requirements. Yeah, that is fine. Mention everything in the resume, whatever you have worked, because as a fresher, I'll tell you, you don't know where what will be your first job. You can be front-end engineer, you can be back-end engineer, you can be DevOps engineer. You don't know, buddy. Interviewer will just check your skills, just check how much time you have put into some skill and what level you have achieved in that, and based on that he will hire you. And after that, like first 6 months to his probation period, so companies don't consider you as a productive in the first 6 months when you join a new company. As a fresher, they will invest in you, they will try to teach you some things, and then after 6 months they will start to expect some work from you, so you have that buffer in there, so don't worry about that. Tell confidently what you have done your internship, bro. When are we doing the voice reveal? Everyone, not only me. कैसे करेंगे वॉइस रिवील? डिस्कॉर्ड पे? I have Claude running here, I have AGY running here. It did some things here. So what it did, it added try catch and logger warning getty message. uh, what you just did, and how can I test this? Testing is important. Everyone, not only me. कैसे वॉइस रिवील? मैं तो बोल रहा हूँ कि फेस रिवील करो. I'll share one Google Meet and come to the stream. बोलो है हिम्मत? अरे यार, ये क्या बग है इसमें? रिसाइज करो तो पूरा स्क्रॉल करता है. Here is a simple explanation. What I just did in the JW, I wrapped the token. वो तो मैं समझ गया. Before this, if client sent a request with a fake, tempered or expired token, your filter would throw an exception like expired JWT exception, this or this cost generic 500 servo internal. So may see this. After this change, if the filter receives bad token, it silently catches the
Error treats the request as a guest unauthenticated and safely lets the request continue. Start your Spring Boot application in IDE. Public endpoint with bad token. Right now, though, it's same only, no? Where is this login? If I login is acha me. Let's see the me. Yeah, me. Is it working? And if I send a token tampered, because yeah, it is giving. See, this is a problem that I saw, and we have to solve it because it's a generic Spring Boot error message object, and that we really don't want because front end will not know what kind of error this is. So front end should always get error response in only one type of error response, and that's it. And that's what we have to change. So we have just changed. Let me re build the application. यही मैं build कर रहा था ना? Yes. Yeah. Let's rebuild and let's test that again. Oh, there are some messages. Prashu, Pranshu Patel. For freshers, do Java backend interviews ask coding implementations like writing functions, or is project explanation enough? I built my projects using AI, but understand the flow and core concept. They will not ask you to write code, but they will like code in like write any function, but they'll ask you coding questions. जैसे for example टेक सिंपल सिंपल एरे वाले क्वेश्चन, मतलब एकदम पहला इंटरव्यू और कंपनी इतनी बड़ी नहीं है तो एक्सपेक्ट की लो लेवल क्वेश्चंस दे विल आस्क एरे मैनिपुलेशंस, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज एरेज और वॉट एवर द बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन द जावा, दे विल श्योरली आस्क द जावा क्वेश्चंस, दे विल गिव यू द कोड or maybe they will post the code in the chat and they'll ask you what would be the output of this. So those questions would be tricky and there is no way to practice those questions, but the chat gpt, go to chat gpt and give that kind of questions if you want. I can share that list of that questions. I had created some questions in that. So interviewers do ask that, but for the project explanation, yeah, they'll ask you questions about project explanation like this, like how we are doing the authentication. So when I was fresher, my project was also in the Spring Boot, and in that one, the interviewer did ask me like, how did you implement the authentication? Which method did you use, get or post? I said post, but then they asked me, can you do it with the get mapping and like that? But that back then, though interviews was quite easy. They used to ask cubes and all, but now the game had changed. Okay, where was I? In the internship, yeah, I read that message now. Not now, cause I'm sitting when everyone is sleeping in the room. The biggest authority, मम्मी. Yeah, मम्मी का डर होना ज़रूरी है. I have subscribed your channel and would love to take career tips from you. Sure, buddy. जितना मेरे को पता है, as I'm working in the industry since 5 years, whatever the internals or whatever the experiences that I have, I'll share with you all. I'm not here to teach anything, by the way. I'm here to learn. So फिर तो job अच्छा भाई, तो और मजे लेने लग गए. Do you know what my current package is? What company I'm working in? Are you talking about DSA or streams concept thing? See. डीएसए तुम्हें डीप में है ना, बहुत ही बड़ी कंपनी पूछती है. मतलब इफ इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, देन दे विल गो deep into your problem solving skills, which is nothing but your DSA. But company, mostly like 80% of the times we will interview for such company which are like small or mid level companies. So in those companies they'll ask you about the basic DSA question, like you can consider hacker rank level of questions or lead code के easy questions.
So not all the concept, but yeah, few. Maybe LinkedIn, max to max LinkedIn, they can ask, or queues, because queues and maps is a very well known concept in Java, so they may ask about that in for the Java. So I'm saying this from my interview. हाँ ब्रदर प्लीज गिव मी अ रेफरल पैकेज रिवील मैंने किया था एक स्ट्रीम पे, कोई ऐसी बंदा आया था तो वी वर डिस्कसिंग. Bro, I made a new theme. Have you seen that? I have seen your most of the themes, bro. At this point, I'm little bit confused about your themes because मुझे थोड़ा थोड़ा ही difference दिखता है. As a creator, you can see a major difference, but as a viewer, I didn't notice much of a difference. Sorry to say this, but uh, I have to look into it very carefully. मैं देखता हूँ. तुमने नया नया शेयर किया है क्या? Do it now also. What do it now also, bro? uh, प्रांशु पटेल, आई टेल यू, मैंने अभी टू बी ऑनेस्ट जावा में ज़्यादा इंटरव्यूज दिए नहीं है, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड री लर्निंग दिस. मैं भी पहले नोड जेएस में, डॉट नेट में, मतलब स्कैटर्ड, मेरा बैक एंड स्किल स्कैटर्ड था. मतलब वॉट एवर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वॉज, आई catered टू दैट. माई फ्रंट एंड वॉज constant. I was working in Angular for most of the time of my career, but backend was changing, like Node.js, कभी Node.js with कुछ अलग ही था, और कभी डॉट नेट था. सो या, नाउ आई वांट टू कीप एन क्लियर फोकस ऑन द जावा, बिकॉज जावा मेरे को पहले कॉलेज में बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस में मैंने कभी यूज़ नहीं किया जावा, सो ये मैं भूल चुका था. This is a refresher that I am doing, and my goal is to get into a Java role. I gave one interview and I failed in the second round of that. So I take that as a feedback, what mistakes I did, and I'll do that. Okay. Yeah, no issues. No issues. Guys, you can also join the Discord server if you want. Link is in the pin chat. You can share your work or ask questions in there. We will be happy to help. पैकेज रिवील भाई, पैकेज ही चाहिए तुम लोगों को. Guess the number and I'll say, okay, if you really want. Don't do it in this chat, but ठीक है. ये कंपाइल हो गया कि अपने को टेस्ट भी तो करना था. वो बात करते ज़्यादा मैं मुंह चला रहा हूँ, काम कम कर रहा हूँ. ऐसे करता रहूँगा तो हो गया मेरा फिर. It give forbidden timestamp status error, but it didn't give the message. Discord पे मैसेज आए हर्ट. Welcome to the Discord, Pranshu, sorry, Pranshu. It's a very new age name, Pranshu. Do this really happen that some SQL query of API can go up to 300 or more than that? Yeah, मैंने खुद लिखा है भाई. MySQL का क्या बताए तुम्हें. There was one such a hectic requirement. एक पूरा grid था. We had a grid, and in that one, each and every cell was editable cell. Not just that, we had to show the history of that edited cell. So we have to write in such a way. We were using Node.js. I actually forgot the uh, framework that we were using for Node. It was also similar to Spring Boot, code first approach. And in there, we wrote procedures, and those went up to like 800 lines, 900 lines of code. होता है भाई, तुम्हें पता कभी पता नहीं है कि. और बैक देन तो देर वॉज नो चैट जीपीटी और एनीथिंग. सब कुछ खुद से लिखा है, एक बार टेस्ट टेस्ट करके उसको लिख के किया था. It took like a week of time, but yeah, it was good.
होता है एसक्यूएल क्वेरी में लिखना पड़ता है. इट वाज नॉट अ क्वेरी, इट वाज अ stored procedure that we wrote, because stored procedure will get you data very fast, but also there were limitations that I understood while working with the SQL query, कि ज़्यादा भी तुमने ज्वाइन किया ना उसमें, तो इट टेक्स 7 8 9 minutes ऑफ टाइम, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो you have to optimize those stored procedures as well, your joins and all. बहुत बहुत. और एसक्यूएल का बहुत ही अजीब फंडा होता है भाई. मैंने ये फेस किया है. वॉच दैट अगेन. नाउ चेक द डिस्कॉर्ड. ठीक है. मीत ने बोला तो यार सुनना ही पड़ता है, देर इज नो अदर ऑप्शन. ये क्या, ये क्या है भाई, लिनक्स क्या, मैं नहीं समझा ये. क्या देखना था मीत. मीत ब्रो, आई एम दैट boomer. Can you please tell how to optimize understand current query that is more than 300 lines and you have seen it first time? Bro, there is a post for retineo theme. मेरे को तो नहीं दिखा. पोस्ट पे तुमने जो भेजा मैंने उस पर क्लिक किया. सो कैन यू प्लीज ऑप्टिमाइज एंड अंडरस्टैंड द करंट क्वेरी दैट इज मोर दैन. अभी तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू चैट जीपीटी एनी एआई कि explain me what is happening in that. And other thing is, like, you can do get the query एंड पहले उसको सिंप्लीफाई करो, रिमूव एक्स्ट्रा जो भी जॉइंट्स वगैरह लिखा हुआ है ना. कीप मिनिमम टेबल्स पॉसिबल एंड कीप मिनिमम कॉलम्स पॉसिबल. अब मैं तो बिना क्वेरी देख के तुम्हें ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन आई यूज टू डू दैट. मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जिससे मेरे दिमाग में क्लिक हो जाए, ओके दिस क्वेरी इज डूइंग दिस थिंग्स. Then add lines one by one, do trial and error. If the query is already present, then you don't have to do trial and error. Just add the subsequent lines and see what data is giving you. And then, yeah, you can understand this. Joins वगैरह तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि just imagine tables, look the tables in that. That is theme or just a new background image. दैट इज थीम और न्यू बैकग्राउंड. कौन सा बैकग्राउंड इमेज. अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज. मेरे को लैपटॉप चार्ज पे लगाने दो. क्या मस्त हवा चल रही है. पुणे का वेदर है यार, आई रियली लव द पुणे का वेदर. नहीं भाई, नो ब्रो. दैट इज थीम और जस्ट बैकग्राउंड इमेज. ब्रो, देर इज अ पोस्ट फॉर रेटिनो थीम. चेक द डिस्कॉर्ड अगेन. रेटनियो थीम, रेट्रो स्टाइल थीम फॉर लेजी. ये तो थीम मैं देख चुका हूँ, और मैंने इसको अपलोड भी किया हुआ है पहले से ही. या नहीं किया हुआ है. आई गेस मैंने मोबाइल से किया हुआ है, मेरे इसमें लॉगिन नहीं है. लेट्स सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो अस. दिस इज योर थीम इन लाइक रेटनियो, retro style theme for neo vim, not an ordinary or lazy. ये मेरा ही कमेंट है भाई, ये मैंने देखा हुआ है. मीत, इट इज़ रियली नाइस. कमेंट किया हुआ है मैंने. फॉर दिस आई विल गिव यू सम पॉइंट्स. शेयरिंग दिस. क्या मेरी इंग्लिश गंदी है भाई साहब.
कैसे मैंने 12वीं पास किया है मेरे को ही पता है। तुमने ना जाना दिल का। मैंने आर्कन के परमिशंस कम किए थे, सो आई डू इट लेटर। हाउ डू यू सी द कोड ब्रदर इन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड? मीट इट इट्स क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अरे ये लेकिन इसने वैलिडेशन एरर क्यों नहीं दिया यहाँ पे, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। This catch, try catch, and in this one catch logger e dot get message and response. Am I doing it right or wrong? ये मैसेज लेकिन वैलिडेशन इसमें क्यों नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है। I got this error message when I hit me API with wrong token. 6 on 6 vision maybe. अनिरुद्ध गेमर, हेलो अनिरुद्ध गेमर, हाउ इज योर स्टार्टअप गोइंग? तुमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया अब तक? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। I guess I have to do the transparency list for people to find the difference. Otherwise, I am able to see the code in that. Yeah, yeah. Same for me, mate. मैंने वो बोला नहीं लेकिन मेरे को चश्मा है। अगर समथिंग विद द मतलब दोनों बैकग्राउंड और टेक्स्ट में ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कम है ना, तो मेरी आंखें दर्द करने लगती है। तो आई कीप हाई कॉन्ट्रास्ट थिंग्स। This is exact expected behavior and proves that your security filter is working perfectly. Here is what happened. You sent a request to me API with a wrong token. You newly updated the JWT, caught the invalid token exception silently without crashing the server. Yeah, that is what we wanted. Never want to crash, never crash your servers because of any exception. It is a very bad thing which can happen, lead to a big production issue, and treated you as a guest. The request continued to Spring Security Authorization layer. ठीक है, Spring Security checked your config and said wait, user me is a private, but this request is anonymous. Block it. Because this blocking happens before the request ever reaches your controller, the global exception handler. Yeah, because it never went to the global exception handler, the API error is of different type, and that is what bothering me now. Spring Security falls back to its default authentication entry point, which returns a generic 403. It is a 403 forbidden. How to customize this to return the beautiful? Yeah, this is what I wanted. Optional but highly professional. If you want Spring Security return API format with 401 unauthorized status instead of generic 40, yes, that is what I want. Bad missing token private, you can configure a custom authentication entry point. Here is a step. ये सब तो चीज़ें सीखनी है भाई। ये अगर मैं ढूंढते बैठ जाता तो नहीं होता है। एआई अच्छा है यार, एआई मेकिंग अ लर्निंग कर्व वेरी वेरी लीन। Look at brothers connections, founders are coming in the chat. अरे he's a college going guy, Anirudh Gamer. He's from mechanical background and he had this good idea about teaching platform. He explained me that day, and he had some problem. He was facing some problems, but he said he will implement. So I wished he didn't reply again. He just what I don't know. He just types hi and vanishes. So I just wished everything is going fine. And the last day, I suggested him not to implement anything from the scratch, but to try to use the existing things that is present and try to make your first MVP work, and then you can implement. Backend keeps showing this error every time, and I'm trying to figure out what's happening. DB exam edge media connection failed query refused. Array, it's a connection refused this.
Mongo, you are using MongoDB, it's a connection refused error. Go to your MongoDB and there is अगर तुम रिमोट क्लाउड वाला MongoDB यूज कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा API अलाउ करना पड़ेगा, सॉरी API बोल रहा हूँ, IP एड्रेस अलाउ करना पड़ेगा. Where can I get the code? This code you mean? If this code you want, this is in my Git repo. You can, I'll share just a second. I'll give you the link now that you have asked. It's a connection refuse, very basic error, Anirudh. Even if you ask any, even if you ask ChatGPT, it will guide you how to solve this in a stepwise manner. It's not a big issue. It's a connection refused issue, and it happens when you try to connect for the first time through code. Bhupendra Kumar, this is the GitHub repo link, and I have implemented the Docker in that. So if you want to have try it out, you can directly try it out. You don't need to do any setup or anything. Just clone the repo and do Docker compose. It will start. थॉरफिन का ये लोगो चेंज हो गया है क्या? It's the first error that you will get, Anirudh Gamer. Just connection refused. It is coming from your backend application. So ask Copilot or ask ChatGPT how to solve it, or do you want my help in that? Then give me the complete error or history. At least give me the error, then गाइज आज मुझे लाइक करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. नाउ आई एम रीचिंग टू द करेक्ट ऑडियंस इट सीम्स. ओके सी आई विल टेल यू द प्रॉब्लम. ये अपना API एरर नहीं है. It's a Spring Boot का custom error, like their default error, which is wrong. Our error response is this. कहाँ API error? API error, हाँ ये. अरे ये नहीं भाई ये. See, this is our API error. It has this local date, status error, message, path, and validation errors. It doesn't have these things, so this is not what we want. So it gave us the steps to implement. It is something authentication entry point. This is something that I don't know. Uh, Meet, it is not about seeing it right now. It is about you have, if somebody have to work on that for say 8 hours a day, then it can become an issue. You have to think in that perspective. Here is the step-by-step guide to implement this. Update the security config Java. भाई जो फिल्टर है वो स्प्रिंग फिल्टर ही है क्या क्या? भाई जो फिल्टर है वही स्प्रिंग फिल्टर ही है क्या, पर सीक्रेट की से वेरीफाई होकर लॉगिन ऑथेंटिकेशन हो जाता है क्या? यार एक तो इतना हिंदी नहीं समझता अपने को. भैया भैया जो फिल्टर है ओके, वो स्प्रिंग फिल्टर ही है क्या, पर सीक्रेट की से वेरीफाई होकर लॉग, हाँ हाँ सीक्रेट की से ही होता है ऑथेंटिकेट. सीक्रेट की से ही होता है. तुम आई शो यू दिस इन द पोस्टमैन. सी कहाँ है? सी दीज आर माई यूजर नेम एंड पासवर्ड credentials that I have. Okay, and this is a wrong password. This is the password. So I hit this. I get a token. The token is generating using JJWT library and using my custom secret. I have a secret string in the code embedded. You can see that. It shouldn't be there. It should be in environment, but for now it's there.
and then for any of the API, see if there is no token or wrong token, it's giving me 403. If I put my array, if put my newly generated token, hopefully it gives, yeah, it gives the response. So for this login, कहाँ गया login? I need login and password, but no token. Token will be generated. See, from this response, token is generated, and for the next subsequent request, I'll need this token to manage to get the response to authenticate the APIs further. So that is what, if I hope that is what you were asking. Anirudh Gamer, he comes up with long list of messages. I first configured MongoDB Atlas to allow only my current IP address, but the connection still wasn't working. Then I changed it to allow access from all IP address, and it's still giving me the, you can't do that. Means you can, but it doesn't allow. Where if you have written star in that, it doesn't allow you that. In MongoDB, क्या बोलते हैं उसका वर्कबेंच, क्या नाम है उसका, एटलास, same connection error, so the issue doesn't seem to be related to network access. I'm trying to figure out what's actually causing the problem. Would be possible for us to connect tomorrow around 12 p.m. on a live stream, 12 p.m. on a live stream video call, so we can uh, ब्रो कल मेरा ऑफिस होता है और दोपहर में 12 बजे तो मेरा काम चलता है, मतलब ऑफिस, आई एम मीन ऑफिस। एरर मेरे को डिटेल दो, एरर जो तुम्हारा एरर लॉग है ना उसमें से एरर निकाल के दो, and I'll just ask ChatGPT what is this actually. It's not a big issue that I can see it from now. Aren't you using any AI for this? Are you trying to do it everything by yourself? Anirudh, paste your complete error message here and I'll just ask the AI. Check the Discord again, bro. मीत भाई, हाँ हाँ, इसमें भी लेटर अभी भी मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। मैं हमेशा क्या बोलते हैं उसको, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट प्रेफर करता हूँ, but if people are liking this then it's fine, it's like my preference. Meet Sony has reached level 3. अनिरुद्ध हाय, अच्छा अनिरुद्ध का मैसेज नहीं देखा हमने। हेलो अनि, ही इज नॉट दैट अनिरुद्ध, ही इज अनिरुद्धा। 2 messages, only 1 message। डीसी पर डाल एरर का, हाँ हाँ यार डिस्कॉर्ड पे डालो, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, इफ नॉट मी कोई और भी हेल्प कर देगा तुम्हें, कोई इशू नहीं है। भैया आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स फॉर जावा डेवलपर, जावा फुल स्टैक डेवलपर, कैन आई गेट। मैं, मेरी खुद की कंपनी होती तो मैं तुम सबको जॉब दे देता हूँ, मैं खुद भी ये सब नहीं करता। यू कैन गेट अ जॉब इफ यू अप्लाई एंड प्रिपेयर फॉर दैट। आई यूज एंटी ग्रेविटी डीबी एग्जाम्पल, मीडिया कनेक्शन फेल्ड। क्वेरी, अरे यही भेजा तुमने, इट्स नॉट अ कंप्लीट एरर मैसेज, नो इट्स नॉट अ कंप्लीट एरर में, लेट्स सी। ठीक है, तुमने इतना जो भी दिया है ना, तुम्हारे लिए एक बार क्लॉड से पूछ लेते हैं कि ये क्या है बबुआ, हाउ कैन आई डील विद दिस एरर। व्हाट इज दिस एरर? व्हाट इट्स सेइंग, इट लुक्स लाइक, स्क्रीनशॉट अगर है तुम्हारे पास तो वो डिस्कॉर्ड पे डाल देना। दिस इज MongoDB's कनेक्शन स्पेशली DNS, या वही मैंने बोला, DNS SRV lookup failure. Here is what it means. Your app is using MongoDB
SRV connection string starts with this format relies on DNS to resolve. Yes, because ये screen यहाँ पे credentials नहीं होते, यहाँ पे query string होता है MongoDB का. So that is what you are using. I'm assuming that because that is the standard way. The connection was actively refused, meaning either the DNS network request couldn't reach the MongoDB server or the MongoDB server isn't running or accessible at that address. MongoDB Atlas cluster is paused or deleted. Free tier clusters auto pause after inactivity. Log into Atlas and check if the cluster is running. Wrong connection string. The host name 800 looks truncated. Wrong. A valid Atlas. तुमने ये लिंक एक बार वेरीफाई करो. तुमने शायद जितना विजिबल है ना वो इसमें उतना ही कॉपी किया होगा. वहाँ पे एक बटन होगा उससे पूरा कॉपी करना. IP not whitelisted. Yeah, Atlas requires your IP to be in the network access allow list. Add 00 for dev or your specific IP. No internet DNS issue. The server running your app can't resolve MongoDB's DNS SRV. इंटरनेट कनेक्टेड है वो भी चेक करना है. इंटरनेट लगता है उसको. Firewall blocking 27017 outbound connection for MongoDB may be blocked. Check Atlas dashboard. Is the cluster active? Verify the full connection. .env file. env file में वो लिंक एक बार चेक कर लेना तुम्हारा. उसका टेस्ट करने का कोई तरीका है वो कनेक्शन उस लिंक से. आई फॉरगॉट. 2 साल पहले मैंने मोंगो पे काम किया था बट देर इज़ अ वे. टेस्ट DNS NS लुकअप. हाँ, ये भी एक तरीका है. ये तुम्हारे टर्मिनल पे NS लुकअप कमांड रन करके देखना तो तुम्हें क्लियरली पता चलेगा तुम्हारा IP एड्रेस वो एटलास पे वाइट लिस्टेड है या नहीं. अगर नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें कुछ एरर देगा ये NS लुकअप. अगर है तो चल जाएगा. हाँ देखो, थॉर भी यही बोल रहा है कि 00. इसने भी यही बोला है 00 ऐड करना, वो ऐड करना. आई हैव सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन. कुड यू चेक डिस्कॉर्ड पे क्या भेजा है. डिस्कॉर्ड पे कहाँ भेजा है तुमने. आई डेंट सी. आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग ब्रो. I have sent the screenshot on Discord. Could you please check me when you get a chance. Discord पे कहाँ भेजा है ब्रो अनिरुद्ध. अच्छा, तुमने वेलकम एंड रूल्स में भेजा. जनरल पे आई वाज चेकिंग नो. इट्स सेइंग एग्जांपल कनेक्शन एग्जाम है फेल्ड क्वेरी MongoDB TCP. मुझे वो दिखाओ तुमने ये कहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है. इससे कुछ नहीं बताएगा ये क्लॉड भी. दिस इमेज आई एम सेंडिंग दिस ऑन योर बिहाफ. तुम्हारा क्या सेटअप है ये. इसमें क्या दिख रहा है. मेटा डेटा कंट्रोलर्स एक बार .env फाइल दे भेजना. मेरे को लग रहा है तुम्हारा उधर कुछ तो लफड़ा है. I can see the error clearly now. The issue db.js config example mongo connection string is broken. या कनेक्शन स्ट्रिंग ब्रोकन है ब्रो तुम्हारा. एक बार फिर से कॉपी करके पेस्ट करना हो कनेक्शन स्ट्रिंग. कुछ तो तुमने इंटर वेंटर स्पेस या कुछ एम्प्टी ये है उसमें तुम्हारे कनेक्शन स्ट्रिंग में. तुम लोगों ने लॉन्च क्यों ये किया है. हाउ कैन आई.
uh, port is this, API base URL this, MongoDB URL retry writes MongoDB, ये तो मेरे को दिखने में तो सही लग रहा है. Let's ask AI, no? Check this .env file. Do you have db.js created separately? मतलब जहाँ से connection, I can see the problem now. Your connection string has 800 in it. 800 is interpreted as a part of hostname instead of your password. You have two @symbols. MongoDB, two symbols है क्या इसमें? The fix your password contains which must be URL. अरे तुम्हारा पासवर्ड गलत है ब्रो. वगैरह ऐसा कुछ तो तुमने रिप्लेस विथ एम्परसेंड 40. पासवर्ड कहाँ डाला है तुमने यहाँ पे? सी मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे ना, जो इसने दिया है क्लॉड ने, वो ट्राई करना. रिप्लेस दिस. अनिरुद्ध, I'll do this on stream. uh, Replace the code with the code that I have just pasted. अनिरुद्ध एक बार ये करके बताना. तुम्हारे पासवर्ड में कुछ ये है, और क्योंकि क्या बोलते हो उसको, जैसे है तो को नहीं लेता, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वो नहीं है, क्या बोलते हो उसको. अगर ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता तो वो ले लेता, लेकिन ये अभी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है, तो वो तुम्हारा लफड़ा हो रहा है का कुछ. ट्राई एंड लेट अस नो ना. चैट कहाँ है? बाप रे, इतने चैट्स आ गए. मिस्ड डीसी पर डाल एरर. हाँ भैया, आई आई आंसर्ड यू भूपेंद्र कुमार आई गेस. Bro, now I am not able to do the leaderboards. What did you do? अरे no, I removed Arcane का ही access. मतलब Arcane के पास so many accesses it had. I removed Arcane. मैं आज रात को इसको एक बार review करता हूँ and I'll add the access. I've not removed any person's access. मेरे को वो पता भी नहीं है कैसे करना है. So don't blame me now. तो मैं एडमिन बनाऊं, विल यू हैंडल दैट, विल यू फिक्स दैट? बिकॉज मैं डिस्कॉर्ड, आई एम नॉट फ्रॉम डिस्कॉर्ड जनरेशन. इफ यू आर विलिंग टू डू दैट मेट, आई विल गिव यू द एडमिन, आई विल मेक यू द एडमिन ऑफ दैट सर्वर. आई हैव सेंट यू स्क्रीनशॉट, ये चेक्ड. ही सेंट इट इन वेलकम. अच्छा अच्छा ठीक है. हाँ थैंक्स. थैंक्स ASROVF. ब्रो प्लीज लेट अस नो व्हाट्स योर नेम. नो, I can see your messages in the Discord and here also. I don't know what's your name. मेरे को सबका नाम पता होना चाहिए. अनिरुद्ध इज ऑन द कॉल ऑन डिस्कॉर्ड. आई डोंट नो. ये मेरा हेडफोन मैकबुक पे साथ नहीं चलता, मतलब मैं बस आवाज़ जा सकती है, आवाज़ आ नहीं सकती इससे. मैकबुक का अलग बकचोद इसी टाइप से ऑडियो कनेक्ट नहीं करने देता. चूत है मैकबुक. आई सेंड स्क्रीनशॉट. या ट्राई दिस क्विकली अनिरुद्ध, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. अब ऐसे एरर देख के आगे बढ़ने का मन नहीं करता. डू लेट अस नो व्हाट हैपन्स. नो, अपडेट योर इम्पोर्ट्स. ओके, बैक टू दिस. क्या कर रहा है? हाँ, ये अपना वैलिडेशन एरर गलत आ रहा था ना, गलत टाइप का एरर आ रहा था, वो फिक्स करना था अपने को. सो इट्स सेइंग कि अपना जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है इसमें मेथड टू इंक्लूड एक्सेप्शन. ओके, इट्स सेइंग थ्रोज एक्सेप्शन. करंटली सिक्योरिटी अपना सिक्योरिटी कॉन्फ़िग कहाँ है अपना? सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी कॉन्फ़िग दिस फाइल. यार ये टर्मिनल पिन हो जाए यार तू. टर्मिनल पिन का ऑप्शन कहाँ है?
भाई यहाँ टर्मिनल पिन क्यों नहीं हो रहा ये? It's throwing an exception. Include exception handling. ये नहीं पता है अपने को सिंटैक्स नो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे क्या है अच्छा ये HTTP सिक्योरिटी का ही कुछ तो सिंटैक्स है। पहला ही सिंटैक्स समझने में जान निकल गई, अब ये नया कुछ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन, अच्छा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, इसको पढ़ लेते हैं एक बार ना, पढ़ ही लेते हैं। रिस्पॉन्स सेट कंटेंट, ठीक है ये समझा। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है एक कस्टम, ये अच्छा अब मैं समझा। सेशन मैनेजमेंट ये क्या है? हाँ सेशन मैनेजमेंट है अपना पहले से, तभी मैं बोलूँ सेशन मैनेजमेंट एंड देन दिस व्हाट डिस्कॉर्ड इज सेइंग। तभी इसलिए मैंने डिसेबल किया था वो आर्केन को, पता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उसको मैं हटा देता हूँ आज ही, उसका इलाज करता हूँ मैं। कहाँ गया क्लॉड, उसने स्क्रीनशॉट्स दिए, लेट्स गेट दिस कॉपी इमेज, उसको दो। एंड व्हाट्स द अदर इमेज? फिक्स हुआ, फिक्स नहीं हुआ था और बिकॉज ही हैज सेंड द एरर का स्क्रीनशॉट नो। Getting this error again. Are you sure you are getting this error again? Anirudh, type fast, no? The host name is now resolving correctly. The ampersand 40 fixed for parsing, but now it's a network atlas issue. The error means DNS server is being this. Most likely your IP is not whitelisted in atlas. Go to this, navigate to this, click this, click this. Wait for 1 minute to apply. Anirudh, this is what also Thor Raviraj said. Try this now. Your first step is correct now. Go and do this. Atlas cluster is paused. Go to database cluster, check and shows. ये भी check कर लेना कि तुम्हारा cluster pause तो नहीं है. Your college office network is blocking MongoDB port. Try switching to mobile hotspot. ये करके देखो भाई. ये भी हो सकता है अगर तुम तुम्हारे कॉलेज नेटवर्क पे कनेक्टेड हो तो वो बहुत बारी डेटाबेसेस को कनेक्ट नहीं करने देता, तो हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके देखना मोबाइल के। या गलती से तुम्हारा कल रात का VPN चालू होगा तो उसको बंद कर देना। I sent you a screenshot and could you check? Yeah, I've checked. I've given you a solution. हाँ भाई मैंने देखा। Bro, put the Discord on in the main. Oh sorry, sorry sir. ये यहाँ कब आ गया, मैंने नोटिस नहीं किया। Sorry मीत सर, my bad. अनिरुद्ध, ट्राई दिस क्विकली। ठीक है ये ट्राई करना, और पहले तो तुम्हारा अगर कंपनी का कनेक्टेड है, सॉरी कंपनी का बोल रहा हूँ, कॉलेज का नेटवर्क में हो तो वो बहुत बारी नहीं करने देता, तो एक बार वो डिस्कनेक्ट करके मोबाइल हॉटस्पॉट से ट्राई करना। चेक तुम्हारा VPN तो कुछ चालू नहीं है ना? सेट यहाँ पे उसने बोला एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ब्रो नाउ आर यू ऑल्सो बिकमिंग डार्क?
भाई हम डार्क ही है भाई। जो बंदा हॉस्टल पे रहा है उससे उससे तुम अंधेरा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। या मेरे को पता नहीं है कैसे ज्वाइन करना है। ऋषि अ, ऋषि ने मैसेज किया था ना यहाँ पे। नहीं नहीं, ज़्यादा आप ज़्यादा जा रहे हो। ऋषि ने मैसेज किया था ना यहाँ पे। कौन था ऋषि? ऋषि सुनक। ऋषि ने नहीं मैसेज किया था। देर इज़ अ न्यू गाय ओवर हियर। मेरे को तुम लोगों का प्रोफाइल देख के नाम याद रहना चाहिए। सो गाइस प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डोंट जस्ट ज्वाइन। ताकि पता है, आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माई ऑडियंस। आई सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन डिस्कॉर्ड, कुड यू प्लीज चेक इट? जस्ट अ सेकंड, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ एक बार। नो, ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सिंटेक्स नहीं समझता है अपने को। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं होगा ब्रो, ये ब्रैकेट खुला ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स डॉट ऐड हेडर्स। ये अपने इसमें काम नहीं कर रहा, ये यहाँ नहीं है, इसके अंदर है। इसके अंदर तो है ये सही से। सेट कॉन्फ़िग एंड सेट स्टेटस 401, ऐसे नहीं लिखना है। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स लिखना है इसको। उसको लिखना है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट अनऑथोराइज्ड। जस्ट अ मिनट ब्रो, मैं बहुत टाइम से इस पे हूँ, तो एक बार मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। देन आई विल कम बैक टू यू। यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है, यस। एंड देन ये मैसेज गलत है अपना, ये उसने फॉर्मेट दिया है, तो विल जस्ट कॉपी दिस। ठीक है, unauthorized this, and we need in our own API object, API error object, and then response dot, कैसे लिखना है इसमें, ऐड हेडर कुछ तो है इसमें लिखने के लिए मैसेज, गेट राइटर डॉट राइट। ये सिंटैक्सेस पता होने में बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को लग रहा है। API error JSON, ठीक है, दिस स्टेप इज डन। लेट्स ट्राई एंड रीरन दिस एंड सी। गोल इज, ये वियर्ड सा एरर नहीं आना चाहिए ना, अलग टाइप का। कहाँ गया है मी डमी? अगर मैं टोकन डालूँ या कोई ये, यहाँ पे अपने ही टाइप का एरर आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। लेट्स सी डिस्कॉर्ड, मीनवाइल इट्स कंपोजिंग। /0 एक बार रिमूव, वो डॉट क्यों दिया है तुमने? 0.0, लास्ट में डॉट नहीं आता ना वहाँ पे, स्लैश से पहले। created as a part of auto process entry valid IP address। यहाँ डॉट, स्लैश से पहले जो डॉट है ना उसको रिमूव। अनिरुद्ध, आई एम सीइंग यू आर नॉट यूजिंग AI very well. I'll tell you, use your all the advantages possible. I know you are from mechanical branch, but
use AI. You to need AI like more than anyone else. You can simply copy instead of pasting this. You can also go to ChatGPT and paste this screenshot. ChatGPT will give you the proper solution over here. So I'm not saying no, don't post in here, but I'm saying try to leverage whatever things you have in your hand. You will only be able to connect to your cluster from the following IP address. ओके एंड क्लॉड ने एक और चीज़ बोली थी, ये भी चेक करना कि तुम्हारे क्लस्टर रनिंग है कि नहीं, क्लस्टर पॉज तो नहीं है ना, ये एक स्टेप करके देख लेना एक बार. डेटाबेस यूज़र, हाँ इसमें रोल और यूज़र्स का भी होता है पता है. यू अभी चेंज दिख रहा है मेरे को. अगर तुम्हारे पास ऐप होता तो एटलास का ऐप भी आता है इसका. यूज़र और रोल देख लेना और तुम्हारे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देख लेना एक बार अनिरुद्ध. इज इट रनिंग? या इट्स रनिंग, लेट्स हिट इट. यस. This is what we want. This is a standard error response. Our application should not throw any other type of error than our own API error. अपनी खुद का API error का response चाहिए, type का response चाहिए, ना कि कोई और हमें नहीं बताएगा कि क्या error है. See, this is a clear message now. Access denied. You must provide a valid token. This step is done. This is what I wanted. Uh, अच्छा मे बी 15 दिन से इनएक्टिव होता है तो होता है. ओके ओके. मे बी ही इज यूजिंग द फ्री टीयर. दैट्स मे बी द इशू. ब्रो अनिरुद्ध, एक बार तुम्हारा हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देखना और प्लीज चेक कि तुम्हारा कोई वीपीएन एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी वीपीएन नहीं होना चाहिए तुम्हारे ब्राउजर में. गिटअप पीआर कोड अवेलेबल है क्या तेरा? गिटअप पे कोड अवेलेबल है क्या तेरा? हाँ सी दिस थॉर थॉर लुकिंग लाइक एक्सपर्ट इन मोंगोडीबी. वहाँ पे कोड पुश कर देना अनिरुद्ध. पुश द कोड and he can resolve this issue. He can help you in resolving this issue. ठीक है, this is done. mm, this is done. Give me commit message. It's already connected to my hotspot. Okay, मतलब कुछ तो और गफला है यहाँ पे अभी फिर. Give me short commit messages buddy. बहुत ही घटिया इसका गिट मैनेजमेंट है इंटेलिजे का. गिट पुश. ओके, दिस इज बिन पुश्ड. बैक टू क्या अनिरुद्ध बोल रहा है. या कैन आई मेक हिम. एक बार वो इन env भी तुमने सही किया. nvm run dev host server js failed connection refused. Still getting this error.
इसका जल्दी जल्दी आउटपुट देना, ये जो कमांड बोल रहा है अनिरुद्ध। रन दिस कमांड। अच्छा, आप पुश करके लिंक दे दो एक बार। रन दिस कमांड टर्मिनल पे और मेरे को बताओ ब्रो पुश नोड मॉड्यूल्स। हाँ, अरे ठीक है यार, नोड मॉड्यूल ज़्यादा होंगे भी नहीं है, 486 MB। ठीक है, ही इज़ अ न्यू गाय। और आई ड्रैंक होल कैन ऑफ कोक एंड नॉट नो वाटर। 2 घंटा जिम करके आया हूँ, मैं पानी लेके आऊँ क्या? अगर मैं पानी लेने गया तो वॉचिंग गिर जाएगी, दैट इज़ वाई आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये इशू तो हो गया। एक और क्या टू डू में था मेरे, हाउ टू हैंडल दिस इज डन, व्हाट इफ, हाँ दिस, अरे अरे अरे, ओ नो 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 नो। यार, ASROVF, प्लीज टेल मी योर नेम, यू लुक लाइक अ फन गाय, एटलीस्ट आई शुड नो योर नेम। ग्लोबल एक्सेप्शन में ये एक जनरल एक्सेप्शन हैंडल करना अभी बाकी है। सो what if any new error comes up and it gives any other any other type of error just like this, then we should have then we should have a way to standardize that error। अपने को कुछ भी रैंडम एरर नहीं चाहिए क्लाइंट के लिए। भाई मैंने 3 4 बार पूछ लिया तुम्हारा नाम, ASROVF, प्लीज लेट मी नो योर नेम। संदीप। When I am coding in IntelliJ, the resource will be locked. How to get out of that permanent? भाई मैं भी ये IntelliJ से इतना खुश नहीं हूँ और मैं भी नया हूँ। मैं जावा सीख रहा हूँ तो अभी IntelliJ यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं VS Code में इसको पेल रहा था। When I am coding in the IntelliJ, the resource will be locked. Let me ask this to let me ask this to Claude, or I can try to reproduce this error for you, and let's see how can I resolve this here. Uh, New chat. Don't read my chats. One of my friend is facing this issue. How to resolve this? I never faced this issue. Please explain me the error first. Error first. Yes, Anirudh, because your push size I saw it's like almost 500 MB. That means you are pushing way too many files. There is a node modules and it should be under the git ignore.
check your git ignore file, or paste the screenshot of your .git ignore file. Will tell you the solution. Like we need to repair resource or store the file. Okay, what is this error? In IntelliJ, resource locking happens when IDE or the JVM process it runs holds a file lock on process files, build outputs. Acha, while building or resources, this prevents other processors, sometimes IntelliJ itself, from modifying, deleting those files. You will typically see errors like cannot delete file, this process cannot be, हाँ शायद ये मेरे को आया था because it is being used by another process, resources out of date file, build jar failures or output git index. Why this happens? Gradle daemon is running background. IntelliJ indexing ID holds the file during indexing. Running app not stopped. Antivirus scanning multiple ID instances. Windows OS file locking. Windows is strict tier. Stop all running processes. तुम्हें क्या मिला हुआ है? Solution क्या दिया था? It's like yellow color and I can't open Java program. AI told me like we need to repair resource or restore the file. हाँ, मे बी ये हो सकता है, और मे बी या तुम विंडोज़ की कोई एक पॉलिसी ब्रेक कर रहे होंगे. चेक करो कि तुम्हारा फोल्डर, सी योर फाइल नेम एट द एंड इज कंसिडर्ड द फाइनल फाइल along with the location name. If your location plus file name is like exceeding the विंडोज़ का कुछ तो 300-400 कैरेक्टर का लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा है तब भी ये इशू आता है, वो फाइल एक्सेस नहीं हो पाती. सो चेक कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जहाँ पे रिसाइड कर रहा है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ एंड इट्स गिविंग सम सॉल्यूशंस. द बेसिक वन, अगर तुम्हारी सर्विसेज ये सब लॉक्ड वॉक्ड है तो पूरा ही टास्क मैनेजर बंद करो, या तो पूरा शट डाउन करके चालू करके देखो फिर से सर्विस, एंड देन ट्राई रीरनिंग दिस. इफ नॉट, I'll paste you this solution what it's saying if you have tried that shutting down everything. uh, I'm trying, is there code in that file or they static files? If static then add it in. Yeah. यार तुमने वीडियो तो नहीं पुश, तुम शायद ट्राई कर रहे हो तुम्हारे एसेट्स से और विच आर इन बिग साइज. कहाँ है तुम्हारा स्क्रीनशॉट में? मैंने कुछ देखा था. वीएस कोड का स्क्रीनशॉट कहाँ है तुम्हारा? देर इज समथिंग बिग इन हियर. लिंक मॉड्यूल्स, राउट्स, अपलोड्स. ये अपलोड्स फोल्डर में कुछ तो है तुम्हारा, ये अपलोड फोल्डर में से डिलीट करके भेजना. अनिरुद्ध, टू यू, इफ यू आर लिसनिंग, डिलीट दिस अपलोड्स फोल्डर में. मे बी तुम्हारा कुछ तो बड़ा वीडियोस वीडियोस है कुछ तो इसमें, वो बाद में ऐड कर लेना, अभी के लिए डिलीट करके वो पुश करना. आर्किनी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ब्रो. अच्छा, you asked what's up, bro. Okay, we can put gifs directly from the text using gif query. Try that. Gif absolute cap. Yeah, it's a cap. Slash gif. Uh, Miss Sony is crazy. Yeah, let's use some Homelander memes, no? Slash gif. Slash gif. Hey, it's a search animation, yeah, bro. Stop capping. It gave something something something.
Sandeep, I'm waiting for your answer. Have you tried restarting, shutting down your PC, or check the file names? Is it like not following the Windows OS convention? It usually doesn't happen, but sometimes it does if you have really long project names or file names. To capture and standardize every single possible unhandled error in your system, you can add generic exception handler. Yeah, generic exception handler. That is what I need. That is what I need. I'm also doing advanced Java learning JDBC and also tried learn Spring Boot. Then, are you reached somewhere? Like what's the current status? क्यों डिलीट करते हो भाई? हाँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम भी वही कर रहे हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कहाँ तक आई तुम्हारी पढ़ाई फिर? स्प्रिंग बूट वगैरह या छोड़ दिया तुमने बीच में से? छोड़ना नहीं है भाई कुछ भी, पकड़ के रखना है सब कुछ. Logger factory get logger, add the fallback handler method, response entity exception class, handle global exception. ओके. ओके, दिस seems easy. ये क्या है मेरे को नहीं समझा, लेकिन प्राइवेट स्टैटिक लॉगर. लॉगर क्यों चाहिए अपने को? मेरे को ये लॉगर नहीं समझा. ब्रदर, आई गॉट अप from the bed, opened the laptop and sat down. uh, where is that? तुम्हें गिट का लिंक मिला क्या? उसने गिट का रेपो लिंक शेयर किया क्या? अनिरुद्ध का मैंने ऐसे ही देखा यार. ही कम्स, ही टेक्स्ट एंड ही वैनिशेस. अच्छा, टू लॉग द मैसेज. ओके. थॉरफिन लव योर डीडी. लव योर डेडिकेशन. या आई टू लव योर डेडिकेशन ब्रो. ये लॉन्च में था ना, अभी नहीं है यहाँ पे. लेट मी पिंग हिम. पुट हिम ऑन अ. ब्रो, Thorfinn is up with your code to fix the problem. Why you vanished? Come back quickly and connect with him. अच्छा, डन. हाँ, लिंक दे दो अभी उसको. गिव हिम द लिंक. लिंक पेस्ट करो अपना इसका. ये लॉगर कहाँ दिखते हैं ये सारे मैसेजेस? बेताज़गी है क्यों? Generic exception handler in case unhandled exception comes and should not should not fuck up our server. So for this exception handler, and in this one exception dot class, and in this one public response entity entity public response entity
and this should be of type our own API error, not handle generic exception. I'm naming it as handle generic exception, and what it will take exception ex. I'm guessing that it will take this, and yes, of course, the request http servlet request. Okay, and in this one, what is this logger dot log information था ना, logger dot. अब सजेशन चाहिए, अब सजेशन नहीं दे रहा, बाकी सब टाइम पे सजेशन देगा। हाँ, ठीक है। And API error, new API error, HTTP internal server error, yes, HTTP stated internal server error, get phrase, and an unexpected error occur, please try again later. Yeah, perfectos. Remove this to do, and I guess this is the end of our this. And now I want to test this. So implemented this. Now tell me, how can I test this thing? Test this generic error now. I left that in the middle, but I'm learning again in training center. They're teaching now JDBC, JE, and doing project food delivery. Nice, nice. सीख रहे हो, छोड़ना नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुमने एक कोई स्टैक पकड़ लिया है तो उसको उसमें से आउटपुट तुम्हें जो चाहिए था वो निकाल के ही आना। फूड डिलीवरी ऐप इज नाइस, यू आर दैट बिल्डिंग। ब्रो आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग जावा स्प्रिंग बूट, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट फ्री रिसोर्सेस। यार तुम देखो, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं कोई रिसोर्सेस वगैरह नहीं, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखता हूँ कंसेप्ट, और जो भी अभी मेरे को एक चीज़ ये करना था, गो एंड रीड द डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ द बेस्ट वे। और आस्क, मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ इसको, ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, ये मेरे को पता करना था, व्हाट इज़ दिस। सो मेरे को रिसोर्सेस तो नहीं पता यार, मतलब see, I'm also following learning Spring Boot and Java for like basic Java syntax वगैरह। जब तक मेरे को syntax ये नहीं हो रहे थे, I was solving lead code. Now I understood कि I have understood Java syntax at one point, so I have started building Spring Boot का project directly. I had a little bit of knowledge on authentication and all. I never tried the JWT because JWT is very basic authentication. In companies, we don't use JWT, we use OAuth 2.0. But for the sake of practicing the Spring Boot, I'm doing this Spring Boot project. It's very simple, straightforward, but at the same time, I'm able to understand how the Spring Boot flow is happening. For example, take this JWT filter. When it runs before the request hits the controller. So whatever the things like validating token or validating requests, everything happens before request goes to the controller. So this is how the flow is. So I'm learning on the go. I'm asking ton of questions to the AIs. I have integrated AIs in here. I am keep on asking questions, and I'm trying to get the answers and try to learn in what's the standard way, not just what I feel right. So this is the way, like do hands-on. There is nothing, no other better way than doing hands-on. Unless you make a ton of mistakes, you will not learn. Yeah, telescope वगैरह 62 hour, but I don't know when I'll be able to finish it. See, goal is not to finish the video lectures. Goal is to do practice. Coding तुम कभी भी videos देख के नहीं सीख पाओगे. Coding is a work of hands and brain. It's not only brain and eyes. I left Spring when going to do authentication. I don't understand that much, but I will continue again. अरे it's not that difficult. अभी मैंने implement किया है, मेरे को भले ही मतलब डेली में एक एक घंटा दे रहा हूँ इसको, but now it is almost done. This authentication is very well. I'll be making videos out of all my streams. Very well. I don't know how to portray it, but I'll try to show it in a very easy manner so you can follow along, or you can use this repo.
I have used the best standard ways to do the basic things. There is no fancy code, no rocket science, nothing, just basic Spring Boot ka code I have in this one authentication. You can use this as a starter project as well, this repo. I started watching Telesco Sir 62-hour video, but I don't know when I'll be able to finish it. मैंने आंसर किया भाई, सीधा प्रैक्टिस करो, सीधा टेक। अगर तुम्हें थोड़ा भी प्रायर एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ भी कोडिंग वगैरह किया है तुमने पहले, सी प्लस प्लस या वगैरह है, इसमें कुछ भी जावा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, या कोड करना स्टार्ट कर दो, या टेक एनी बेसिक प्रोजेक्ट, ट्राई एनी डमी एपीआई, कुछ कुछ भी करो, लेकिन कोड, हाथ से कोड जब तक नहीं लिखोगे, ट्राई गेटिंग सम असाइनमेंट्स। कोई ऑनलाइन असाइनमेंट्स हो गया, चैट जीपीटी को बोलो मेरे को छोटे छोटे असाइनमेंट्स दो एंड सॉल्व दोस। कीप वॉचिंग द वीडियो साइड बाय साइड, बट फोकस कीप डूइंग दिस एज वेल। मेरा लाइव बहुत पीछे है क्या? देर इज अ लैग इन दिस। गाइज, प्लीज डू लाइक द वीडियोज। माई डेली टारगेट इज नाउ टर्न टू 10, so I can see 7 likes. Go Discord. Please do like the stream, guys. Discord कहाँ गए हो? सिर्फ ताज़गी है किसके, तुम क्यों डरे? हेलना क्या हुआ? बियॉन्ड कुक्ड। बाप रे, दिस इज योर सेटअप ब्रो, दिस इज नॉट योर सेटअप ब्रो, you don't even have windows. Meet. ब्रो अनिरुद्ध, कहाँ से चालू करे? Anirudh, should I give you one honest reply, or do you know Git, Anirudh? By don't mind, I don't know how to get code from GitHub Spring project, like because two parts are different, front end and back end. So can you okay, या मैंने मोनो रेपो रखा है कि मेरे को फ्यूचर में डॉकर ये करना था। सी देर आर, इग्नोर द फ्रंट एंड, इफ यू जस्ट वांट बैक एंड, देर इज अ बैक एंड फोल्डर क्लियरली, go in this folder and you have to actually clone the repo, and there you will get both the folder, just cd backend, and in this backend complete java ka project hai, whatever I am doing right now, it's everything in here. So just focus on the backend wala folder, and in this I have like added readme files. Quick start, yeah. See, this is a quick start. For you to run this project, you will need Docker Desktop install, nothing else. If you don't have Docker Desktop, then you will need like Java, MySQL, npm, a ton of things. But don't go in that loophole. Just download Docker Desktop, whatever the OS you have. Download Docker Desktop. I have mentioned the link. Once Docker is there, open the application once installed, the Docker or desktop application, and then come to your folder cd backend, like you will see this. कहाँ गया? Wait, I'll show you in my terminal. In this terminal, you should be at this. It's my Rohit. Ignore this backend folder, and in this backend folder, once you are in there, just try to run this docker compose upd. Okay, and it will start everything. Sorry, docker compose hyphen build. First build the project. You will have to build the project, and then it will be okay to go.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट टू डू फॉर लीड कोड. लीड कोड के लिए माथापच्ची करना पड़ेगा. एकदम आई शो यू वन स्टाइवर्स लिस्ट. तुम लोगों को तो स्टाइवर्स लिस्ट पता ही होगा. स्टाइवर्स लिस्ट फॉलो करो, या तो मैं एक तरीका फॉलो करता हूँ. गो टू चैट जीपीटी, टेक द कंसेप्ट्स वन बाय वन. सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आता है? सबसे पहले मैंने शायद लिंक लिस्ट किया. सो लिंक लिस्ट वाला, तुम्हें तो बेसिक लिंक लिस्ट पता ही होगा. अगर नहीं है तो कोई भी एक यूट्यूब से वीडियो देख लेना. एंड गो टू चैट जीपीटी, से गिव मी easy list of easy problems from the lead code, so that I should clear my doubts one by one as I move forward in that list. So the ChatGPT will give you the most easiest problem possible from the lead code. Try to solve that. It may take you an hour, but take an hour. And how to solve the problem very well, like first 50 problems, I have created a video in that, a complete process that I have followed. It's there on my YouTube. uh, if you go to my channel, and it is the last video that I have posted, so you can check that video, or maybe I can share, give you the link. So how actually I solve the problems. मैंने कुछ ज़्यादा problems नहीं solve किए. I'm also like a beginner in that. 60 problems almost I have solved, so you can watch this video. Frenzy. Okay, Sandeep. I know how to get Merge Stack project I have done imported in VS Code, but this Spring Boot, how to get both connection done after importing. मैंने बताया ना तुम्हें अभी. Do cd backend and run docker compose. Bro, ओपन अ टर्मिनल जहाँ पे तुम्हारा फोल्डर है, वहाँ पे ये कमेंट रन करो. तुम्हारा बैकएंड भी छोड़ ही दो, बस यही ये रन करो. इतना तुम्हारा सब कुछ ही चल जाएगा. रन दिस कमांड. जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे टर्मिनल खोलो, संदीप, एंड रन दिस कमांड. इट विल रन. नो, आई विल डायरेक्टली ओपन इन IntelliJ. आई विल रन मेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड डू टेस्टिंग. वो ऐसे नहीं रन होगा. वैसे नहीं रन होगा. तुम्हारे पास लकीली सेटअप है, लेकिन सबके पास नहीं होता. इसलिए मैंने उसको डॉकर में, सब कुछ एप्लीकेशन ऐसे निकाल के डॉकर में भरा हुआ है. वो डॉकर में ही तुम्हें रन करना पड़ेगा. उसके लिए एक ही सिंपल एक कमांड है, जो ये है डॉकर कंपोज सी. अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू. सब कुछ करेगा करेगा करेगा, और फिर तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा. इफ नॉट, तुम अपना लोकल का एआई की मदद से एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाके, अरे यार, अगर तुम्हें वैसे रन करना है तो यहाँ पे तुम अपना डेटाबेस का इंफॉर्मेशन डाल दो. ये मेरे डेटाबेस का है, और जो कि डॉकर से आ रहा है. अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम अपना डाल के यहाँ से खुद का लोकली रन कर सकते हो प्रोजेक्ट. वो तुम को पायलट की सहायता से कर सकते हो. डिस्कॉर्ड इज रिंगिंग. और एआई जनरेटर सर, या इट्स एआई जनरेटेड. या दिस इज माय सेटअप सर. अरे सेटअप नहीं, उसका कुछ तो चल रहा था फ्रेंड्स. वो सिम्स दैट वाज फ्यूचर सेटअप. I'll create a detailed video tomorrow morning explaining the full code base. अरे नहीं bro, all the features, exact issue. Anirudh, do you know GitHub first and foremost? Because you have shared this uh, image, it clearly means there is no code present in your GitHub. I'll create a detailed video tomorrow morning explaining the full code base, all features, the exact issue I'm facing. I'll upload it on YouTube and share it with you, so you can review everything properly and help me. अरे नहीं अनुरुद्ध यार, नहीं.
सी अनिरुद्ध, तुम है ना बहुत आगे का अच्छे से सोच रहे हो, लेकिन जो बेसिक्स है उसमें गलती कर रहे हो। पहले तो तुम अपना कोड गिटअप पे ले आओ, उसके लिए यू वॉच वीडियो कि गिटअप पे कैसे कोड ये करना है। को पायलट इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारे इसमें स्टूडेंट का कोई लाइसेंस होगा तो उसमें फ्री मिलेगा तुम्हें, वो यूज़ कर लो। या सीधा सीधा चैट जीपीटी फ्री ही है, चैट जीपीटी को यूज़ कर लो। तुम्हारे गिटअप पे कोड ही नहीं है तो तुम्हें वो थॉर हेल्प करने वाला तो कैसे हेल्प करेगा वो। तुम्हारे फीचर्स और उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, तुम बेसिक्स में ही अटके हुए हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्विक सेटअप का लिखा हुआ है, तुम्हें अपने फोल्डर जहाँ पे भी फोल्डर है वहाँ पे गिट इनिट करके तुम्हें ये कोड पुश करो। यहाँ पे अभी कुछ कोड नहीं दिख रहा, मतलब स्क्रीनशॉट से तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बाद में तुमने पुश किया है तो इग्नोर, बट अगर नहीं किया है तो यहाँ पे कोड नहीं है तुम्हारा। नथिंग टू कमिट ना। तुम पहले ये अपना सही कर लो यार, किसी की हेल्प ले लो। तो अगर तुम हॉस्टल हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज में हो, तो कोई दोस्त की हेल्प ले लो ये कैसे करना है, या वीडियो देख लो। गिटअप, तुम्हें गिटअप में ही कंफ्यूजन है, तुम आगे करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा ना। Nobody can help you in such situation then. Don't don't create a video and all about your features or explaining this and that. Okay. Thorfinn was typing something. Acha, you got the code, which is nice then. Open claw list. ठीक है, हमने आज का तो सब कुछ पुश कर दिया है। आ, अच्छा, ये बाकी रह गया ना, इसका कमिट मैसेज ले लेते हैं। हाँ, ये टेस्ट करना, बातचीत के चक्कर में टेस्ट करना ही भूल गया। ओके, आई गॉट इट। What if I want to change in project? I know how to change in properties. Yeah, you can change whatever the changes you want. You can do it, bro. Sandeep, no issues. If you want to contribute, then let me know. Do ping in Discord. I'll give you some task if you really want to contribute in this. If not, you can use this as a reference project and do any changes locally. It's not a problem. If you are still here, Sandeep, I guess I missed your message. मेरे को भूख क्यों लग रहा है यार, खाना खाने के बाद भी अभी। हाँ, मेरे को ये टेस्ट करना था। क्विकली टेस्ट करते हैं इसको। क्या स्टेप्स दे रहा है टेस्ट करने के लिए, क्या आया डिस्कॉर्ड पे। ओ नाइस नाइस नाइस, देन इग्नोर माय लेक्चर ब्रो, बिकॉज तुमने ये स्क्रीनशॉट भेजा, मेरे को लगा ये क्या है कि कोड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसने भी ये लिखा हेल ना ब्रो, बियॉन्ड कुक्ड। देन यू आर इन गुड। अब क्या प्रॉब्लम है, या फिर एंटी ग्रेविटी को ही बोलना कि पुश माय कोड ऑन गिटहब। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा लेक्चर देन, मेरे को लगा तुम बहुत ही कुक्ड हो, बट इट्स समथिंग। या क्या है, यू सेड यू यूज एंटी ग्रेविटी ना, उसको बोलो कि स्कैन माई रेपो एंड जनरेट अ गिट इग्नोर फाइल। हाँ यार, मतलब लेकिन गिट इग्नोर तुमने एडिट क्यों किया, उसमें बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल्स इग्नोर्ड होते हैं। गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार, वी आर एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम। क्या टाइम हो रहा है, 12:30। Here is the easiest safest way to do it. Temporarily edit user controller, open user controller, find your this, okay, ये testing के लिए, and then modify it to throw a random unhandled exception, okay.
ठीक है, ये बोल रहा है इसको ऐसे टेस्ट करना है, क्योंकि टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वांट टू पोस्ट पुश एनी कोड विच इज नॉट टेस्टेड, and that is a wrong practice, pushing a code just because AI has given you, considering it as a simulated database timeout और system crash. ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं एक बार. ओ हमदम सोनिया वे, ओ हमदम शाम को खिड़की से. Yeah, okay, okay. Sandeep, I hope you like the stream, no? I am like 2 likes lagging in reaching the 10 likes. I need 10 likes. See, this is what we did. We solved like to not actually solve Anirudh problem is still in pending, but we at least give it a try. Give it a try. So we can help each other. So I'm trying to build a good community of people in here. So you can try to like the stream so that next time whenever I am online, you will get a notification or you will get a stream in the suggestion, and then still I can try to join. If you still like it, then you can think of subscribing the channel. You don't have to subscribe it right away. I'm not even asking that. Hey, it gave me acha, it gave me this correct, no, unhandle unauthorized access denied. Na, hell nah, bro, where is my token, give me the token, give me the token. Then this, अबे यार, भूख लग रही है यार. व्हाट शुड, ये डैशबोर्ड रन करना था अपने को, अपन ने क्या ये रन कर रहे. Unexpected error occurred, please try. Yeah, it giving the general errors in our own API response, and this is the perfect setup that we have done, and I'm really liking this. I'm in love with myself at this point. So yeah, and yes, anti-gravity as well. Anti-gravity is really good. Per you didn't join the stream, but your suggestion of using anti-gravity is really helping me a lot. Generate me the git message here. Guys, एक लाइक बाकी है. कोई अगर किसी ने लाइक नहीं किया, if somebody have forgot to like, please do like the stream. I just need 1 like to hit the 10 likes का target. I can see 10 current concurrent watching. Okay, I got you. You have deployed your project in Docker, but I just want to know how to get back in Spring and front end in VS Code. I just know the things. Okay, see, तुमने रेपो क्लोन कर लिया और तुम्हारे पास अभी मेरा वो एज इट इज़ फोल्डर है. वहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड. फ्रंट एंड फोल्डर खोलना. फ्रंट एंड फोल्डर खोलने के बाद ऊपर जो एड्रेस बार है ना, उस पे ऊपर जो एड्रेस बार है उसमें जाओ, जो भी एड्रेस लिखा है उसको हटा दो. वहाँ पे राइट cmd, दैट मीन्स ओपन टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ओवर देयर एंड जस्ट राइट कोड स्पेस डॉट and open. It will open the front end application in the VS Code for you, and everything will be there. You just do npm install and then npm start. It will run your front end. Then for the backend, same thing. Open the backend folder. Open the backend folder and do sorry, what I was saying. Yeah, open the backend folder and from the terminal, or like open the IntelliJ in that folder. And from there you can do application properties update as per your application properties and start running that application.
So that's how you can do. It's just the two folders, two different projects in the one single folder. You just open both the folders differently. Whatever you do the changes, it will go to the same git. That is what it is. Open two folders in different IDs. For front end different, for back end different. Anirudh, I don't think everything is right. भाईजान now open Discord and chat. Yeah. हाँ एक बार मेरे को ये पुश करने दो. फीचर ग्लोबल ऐड कैच ऑल सेफ्टी अनएक्सपेक्टेड एरर. हाँ हैंडल जेनरिक. I'll tell you this AI LLMs are made in such a way that it will consume maximum tokens possible. You have to control that. समझ गए प्रदीप? Sorry संदीप. Yeah, you have still confusion. If you still have any confusion, please ask. Don't hesitate. I'll still answer you. Okay, this is pushed. Now error handling का part is done. Okay, okay. Sandeep. Yeah, Sandeep. Hello, Sandeep. Mm, my Obsidian usage so far. Quick shell rice, kind of thinking of making my own full rice on quick shell with widgets. Uh, rice. Guys, I ate rice paper today. Have you guys ate rice paper? It's very good thing to do weight loss. कहाँ है तुम्हारा यूसेज? कहाँ लिखा हुआ है इसमें? My obsidian usage so far. कोणाचं कोणाचं काय तर कोणाचं काय. बरोबर आहे मित्रा. तुझ्याशी एकदा भेटायला पाहिजे थॉर्फिन. तू पुण्यातच एरवाड्यालाच राहतोस. सो देर विल बी अ डे दॅट वी विल मीट. ठीक है. Don't worry, bro. You are doing great work. Thanks for the help. Yeah, thank you so much, bro. Thanks for this kind words. नहीं तो हमारी रेगुलर जनता मीत कभी तारीफ ही नहीं कर रही है मैं इतना कोड लिख रहा हूँ तो. भाईजान नो ओपन डिस्कॉर्ड. यस, आई डिड दैट. Yeah, that's good thing for backend one separate folder for both we can import separately, and I just want to know how you add changes in GitHub after every change. Yeah, simple. यहाँ पे मतलब जो भी मेरा कोड है देखो, बैकएंड का कोड बैकएंड फोल्डर में ही जा रहा है. यहाँ पे जस्ट आई एम रेजिंग द पीआर. जो भी अभी अभी जस्ट मैंने पुश किया, जैसे ये फाइल्स है इसको मैं पुश कर देता हूँ और ये चला जाता है बैकएंड फोल्डर में ही. और सेम मेरा फ्रंट एंड, अभी फ्रंट एंड खुला नहीं है, बंद है मेरा इसमें, लेकिन फ्रंट एंड का चेंजेस फ्रंट एंड में जाता है. सो इतने रात को कौन क्या जला रहा है यहाँ पे भाई? सो यहाँ पे अगर यू गो टू कमिट्स, पुल रिक्वेस्ट नहीं, हिस्ट्री कहाँ है अपना? सी यहाँ पे जो भी कमिट्स है ना वो अपने अपने फोल्डर में चले जाते हैं. सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. मतलब सिंपल दो फोल्डर है अलग अलग, एक ही जगह पे ये जाता है. बुल टैरिफ डन ट्रू. इट्स अ सिंपल टू फोल्डर स्ट्रक्चर. इसको मोनोरेपो बोलते हैं, बहुत बार यूज होता है इंडस्ट्री में भी. कोई पुराने कई के प्रोजेक्ट्स में भी मोनोरेपो यूज होता है, तो वहाँ पे ही सब कुछ होता है. नॉट स्पेसिफिकली दे यूज लाइक बैक एंड फ्रंट एंड एक रेपो में नहीं होता है. इट्स वेरी रेयर, बट लाइक फ्रंट एंड के अलग अलग माइक्रो फ्रंट एंड्स होते हैं एक जगह पे.
मच्छर काट रहे भाई। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग का क्या दिख रहा है? अच्छा, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन गाइड, ये हमने कब ऐड किया? अच्छा, ये इसमें आ गया इसका रीडमी। अच्छा, जो भी फाइल्स रीडमी वगैरह डाल रखे हैं वो। इश्यूज क्या है? वेरीफाई, हाँ, यस दिस इज डन। असाइन टू योर सेल्फ, नो आई विल वेरीफाई दिस। उसके पहले अपन नहीं मार्क करेंगे। ये एजेंट्स क्या है? नो सेशंस। इसमें तो डिप्लॉयमेंट में भी मज़ा आएगा। डॉकर इमेज कॉन्फ़िगर करके कुबरनेटिस वगैरह ये सब भी मस्त सीखेंगे, मस्त डिप्लॉय मारेंगे, मस्त मज़ा आएगा। सी लोकल होस्ट, वो डॉकर इमेज चलाने से ये लोकल होस्ट भी चल ही रहा है। संदीप फॉर यू आई एम शोइंग दिस, इट्स रनिंग। जो भी कोड होता है ना वो उसमें चल जाता है। Error remote origin already exists means you already added origin before. Tell me what is that, tell me the meaning of that, you both spy agents. किसी को सूली की आस, सबकी अपनी। Got the meanings now, I can finally say. किसी को नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका, ये कहाँ से मीनिंग निकाला तुमने? सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कोई मरे कोई जीव। नहीं नहीं, ये मीनिंग नहीं है भाई। लॉल, लिटरली लॉल ब्रो, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। कोणाचं काय तर कोणाचं काय मीन्स कि अभी एक इशू पे डिस्कशन चल रहे थे, उसका कुछ अलग चल रहा है, तुमने अपना ये डाल दिया ऑब्सिडियन यूसेज, तो इट्स अ फनी वे टू से इट कि कौन किसका कुछ तो किसका कुछ। ठीक है गाइस, कोई एक लाइक नहीं देना चाह रहा मेरे को, नो लाइक पे एंड करते हैं मेरे को लग रहा है। इट इज़ डन, हाँ इट इज़ डन, इट इज़ वेरी नाइसली डन। जो कि एरर्स मेरे को चाहिए थे, ऐसे ही एरर्स, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे बहुत ही मस्त दिखेगा, दैट्स वाई आई हैव डन इट। एंड द ग्लोबल एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ट्रूली ट्रूली नाइस। ये मेरे को बहुत दिन से नहीं समझ में आ रहा था, मैंने एक कोई वीडियो देखा था, इसका लेक्चर देखा था मतलब, आई डोंट रिमेंबर, उसने भी थोड़ा बताया था, लेकिन अनलेस ऑनटिल वी गो एंड अप्लाई इट बाय आवर सेल्फ ना। एआई ने भी जो इम्प्लीमेंट किया था वो कुछ भी किया था, मतलब ही वाज लाइक राइटिंग वॉट एवर द कस्टम एक्सेप्शंस दैट वी हैव रिटर्न, ही वाज राइटिंग all the exceptions inside the global errors, but it is not the correct way. Correct way is this. This is standard way. Handle business exception. For every business exception that we create, that we have to think of, it will go through this and return this error in this way. Okay. Then there is this validations, handle validations. So whatever the validations we have, like email must present, password should not be blank, password का length 8 कैरेक्टर होना चाहिए, सब validations हमने DTO में जो जो मेंशन किया हुआ है कि पासवर्ड ये होना चाहिए, पैटर्न मतलब पासवर्ड शुड कंटेन 1 लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 कैपिटल, 1 डिजिट, 1 स्पेशल, सब कुछ ये यहाँ से मैनेज होगा इन द ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। यहाँ पे हैंडल वैलिडेशन, ग्लोबल वैलिडेशन, ओके यहाँ से ये होगा, एंड यहाँ पे हम सेम वैलिडेशन को भी इन फॉर्म ऑफ एरर्स भेजेंगे यूज़र को। अगर यूज़र गलत रिक्वेस्ट भेजता है अपने को, मतलब रिक्वेस्ट में ईमेल प्रेजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी विल गिव अ प्रॉपर वैलिडेशन एरर, बट दोज वैलिडेशन एरर विल नॉट बी पार्ट ऑफ मैसेज, इट विल बी पार्ट ऑफ दिस वैलिडेशन एरर ऑब्जेक्ट। ओके, देन देर इज दिस हैंडल डिसेबल्ड फंक्शन। अभी ये थोड़ा सा अलग था कि मतलब यूज़र इन केस डिसेबल्ड है तो उसको मैसेज दिखाने के लिए स्प्रिंग रन्स इट्स ओन throws its own disabled exception. It doesn't rely on our exception, so our business logic wouldn't work in here. So I got to know it while doing trial and error, like doing the testing. So then I asked the AI and it gave me this is the correct way. So it is forbidden value, like you are forbidden because the user is inactive, you can't access. So the clear message, the readable message that we are giving, our whole point of creating this API error is to give the readable errors to the client, so that client don't have to figure out oh kya error aaya, what's the error, what I have to figure it out from. No, just get the readable error, show it to the user, and you are done.
Client has no brain in this. So your account has been deactivated. Please contact support to reactivate. This is the deactivation का एक अलग से एक exception का exception है ये. Then there is bad credentials, just like कि ये एक exception handle करता है स्प्रिंग बूट, वैसे ही एक बैड क्रेडेंशियल्स वो खुद ही करता है, ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू गो इन द पासवर्ड एंड क्रिएट माई ओन custom exception saying the password invalid or something. The request will not come to our exception. It will be tried in and before the request actually goes to there. So this is controlled by handled by Spring Boot, and the exception name is bad credentials exception, that we should know whenever the credentials is bad. In this case I am passing this user friendly message, invalid email or password, please check your credential. That it generally means only password is incorrect, but for the sake of user to understand, email or password is incorrect. And then there is generic exception in case if any of the such errors, these two errors we got to know while testing, but अभी अपने को spring boot पता है कितना है, maybe 2% 3%, rest of the spring boot we don't know. There may be cases a new error, unchecked error comes up and our server may crash. Server, if server might not crash, server gives the generic error message, it will go to front end, but then front end will crash. Front end पे console पे errors आना चालू हो जाएंगे, because this is an another type of error that we have said our client that, oh no, we'll send our error responses in this API error format only, this API error format only. But now you have given me some new kind of error. How would I handle this? So to save the client from getting different kinds of messages, we have written this a generic exception handler. It will handle all the other exceptions which will come. Unhandle exception, in case it comes, it should not come ideally, but if it comes, then we will just give internal server error and a message, an unexpected error occurred, please try again later, and that's it, and we will send it in the same API error format, so that if you check the response entity of each error, it's same API error, and that's how it become very fucking easy and you can use it. So this has become my go-to code now, global exception handler. I have pushed it to the GitHub. So I am really liking this stuff. I was working since 2 days on this. I was stuck. 10 like done. Thank you so much. Thank you so much guys. 11-12 like दिख रहे ना मेरे को अभी. Can you tell me about yourself? इतना बोल दिया भाई, अब मेरे बारे में क्या बोलूँ मैं. ब्रो आई यूज डिफरेंट अकाउंट वेटिंग फॉर लाइक्स. डन एंड गुड नाइट. थैंक यू सो मच एस. ब्रो तुम अपना नाम नहीं बताया अब तक. थैंक यू सो मच ब्रो. समित नहीं ज्वाइन कर रहा यार बहुत दिनों से. व्हाट्स योर नेम. हाँ मैं डिस्कॉर्ड का नाम ये सुन रहा हूँ. 10 लाइक्स डन. थैंक यू सो मच. और मैंने कुछ मिस किया गया, दैट्स अ गुड थिंग. कैन यू टेल मी अबाउट. मैं बताता हूँ अभी अगले स्ट्रीम में बताता हूँ अपने बारे में ना. कल मेरे को सुबह सुबह ऑफिस जाना है. कल 10:30 बजे मेरा कॉल होता है. बोला तो वो सिड. अच्छा सिड बोला क्या, मैंने मिस किया क्या. कहाँ बोला भाई थॉर. ब्रो आई यूज डिफरेंट अकाउंट. 10 लाइक्स डू 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 क्या है. यप यप यप. हाँ हाँ चल चल भाई चल. इतना लिखा मैं अब तो बोलूंगा ही ना भाई, मतलब बोले भी ना. अच्छा ठीक है सिड नाम है. अरे नेम इज सिड ब्रो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 times बट सॉरी ब्रो. मैं इग्नोर किया क्या, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. ठीक है माय बैड सिड ब्रो. थैंक्स फॉर द लाइक्स ब्रो. हिज नेम इज सिड. हाँ हाँ पता चल गया भाई. The error is fixed bro. I tell my AI as I see I use anti-gravity and he just fixed the yeah अनिरुद्ध. मैंने भी कुछ दिनों पहले ये किया है कि एंटी ग्रेविटी बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया एंटी ग्रेविटी. मैं भी खुद एंटी ग्रेविटी पे ही सब अपना काम चल रहा है अभी. मैंने क्लॉड वगैरह सब छोड़ के एंटी ग्रेविटी पे आया हूँ. एंटी ग्रेविटी इज गुड. गुड वर्क भाई. क्रेजी एकदम.
थॉर भाई तू ना एकदम हरामी है भाई, हरामी साला। ऊपर बोल रहा है याप हाँ। Anirudh, you can say thanks to Thorfinn. His name is Raj. He really helped you. वो बेड से उठ के लैपटॉप खोल के बैठा था तुम्हारे लिए। Anirudh, this error fixed bro. I tell AI I use anti-gravity and he just fixed it. Yeah, cool. आर्केन के मैसेजेस भाई, हर एक मैसेज पे ये बकचोदी पेल रहा है। कोई नहीं, विल गिव add XP to Thorfinn now for helping out। अनिरुद्ध क्यों नहीं टैग हो रहा? एंड अच्छा वो मैंने डिसेबल करके रखा था। स्टिल भाई यू शुड स्टडी गिट बेसिक्स। व्हाट्स दैट इन टर्मिनल यू यूजिंग एआई? हाँ इट्स, आई टेल यू। ये एंटी ग्रेविटी है। इसको अगर तुम्हें कोई टर्मिनल में खोलना है तो देर इज अ कमांड, यू जस्ट टाइप AGY and anti-gravity session will start. It will take you to the sign in. It will ask first time the API code. So you have to copy that API code from browser and paste it here. It is a similar way how Claude code works. You know, Claude code has this. It's still open in my here. It will open a radio. सुनाई दे रहा होगा तुम लोगों को। डू द लीडर बोर्ड्स, अरे वो मैंने कमांड उसकी ये किए थे। तुम्हें तुम्हें पॉइंट्स देना भी बाकी है। 2000 पॉइंट जो मैंने माइनस किए थे वो तुम्हें वापस दे देता हूँ। वो मैंने आर्केन का ही सब कुछ हटा दिया था, उसको मैं वापस देना पड़ेगा मेरे को परमिशंस। आई विल डू दैट। कैन आई डू दिस नाउ? आई डोंट वांट टू बी लुक लाइक अ बूमर हु डजंट नो डिस्कॉर्ड। भाई दैट मॉडरेटर्स चैट्स आर ऑफ PDHDC। क्या भाई दैट, यार ये ट्रांसलेट फीचर हेल्प की जगह भाई वो मॉडरेटर का चैट्स पर DC के। थैंक यू थॉर ब्रो, बट आई लाइक थोकी लोकी। अच्छा अच्छा, ये मैसेज मैंने एक ही। ओ शिट, वेट फॉर द रिप्लाई। You probably pushed successfully locally, but GitHub rejected or interrupted the upload before merge. I got this savage reply from Gemini. तुझा सेकंड ब्रेन पण बिल्ड केला असतं रे, पण मला कस्टम प्लगइन मध्ये झिरो डेटा फाउंडचा एरर नाही पाहिजे होता. माझं ग्राफ व्यू बघून तर तुला तेच कळत नाहीये. मी तुला तेच व्हिज्युअल फॉर्मॅटमध्ये शिकवतो आहे की तू किती फुकर आहेस. तुझ्यासाठी मी मार्कडाऊन फॉर्मॅटमध्ये बोरिंग फ्रेंडचा टॅग लावला आहे. डिलीट करू का? तू तेच कर. कोणाचं काय तर कोणाचं काय बोलून स्वतःचीच खिल्ली उडव. AI इज क्वाइट भाई इट्स रियली मेकिंग नो सेंस। इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है राज? डायबोलिकल या भाई, वो डायबोलिकल उसने, क्या नाम है उसका, विलियम बुचर ने वो बहुत पॉपुलर कर दिया वर्ड है डायबोलिकल। ही सेज इन फकिंग टोन ब्रिटिश एक्सेंट इन द बॉयज डायबोलिकल। ही सेज टू, क्या उसका क्या नाम होता है, स्टार बॉय जो कैप्टन अमेरिका वाला जो है। तो क्या करूं मैं, नहीं आती मराठी मुझे। इट्स ओके ब्रो। देयर फिक्स ब्रो, आई टेल माय यस यस। हाँ सो ठीक है, डायबोलिकल समझा संदीप ये कैसे यूज हो रहा है? जस्ट ए AGY कमांड, इट्स कॉल्ड कोड, क्लॉड कोड बोलते हैं इसको।
और इसको AGY एंटी ग्रेविटी का अगर तुम्हें टर्मिनल में यूज़ करना है तो जस्ट राइट AGY, इट विल whatever the terminal, it will ask for the folder permissions. You have to open it in particular folder जहाँ पे तुम्हें वो यूज़ करना है ये। ठीक है guys, it was a good stream. I like the stream and we are at the end of this implementation. थोड़ा बहुत एक ईमेल इंटीग्रेशन बाकी है, वो मेरे को एरर हैंडलिंग के बाद ही करना था। दैट आई विल डू टिल दिस वीकेंड। और या फिर जो फ्रंट एंड में मज़ा आएगा इंटीग्रेट करने में वही। व्हाट CLI टूल डू यू वांट, आई वुड लव टू मेक। बताओ भाई संदीप इसको। ये हमारे ऑपरेटिंग OS के शेयर है जो सारे ये बना देते। वेर इज समित गाय ब्रो? समित इज नॉट ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। उसके एग्जाम चल रहे थे, उसने बोले थे। सिड, हाउ टू ऐड हियर? ये प्लस साइन जो दिख रहा है ना, ये प्लस साइन पे क्लिक करना एंड ओपन अ बैश टर्मिनल इन हियर। सॉरी, ये तुम्हारा ऊपर वाला ओपन है, डॉकर का है। ये नीचे जो है ना, इसके नीचे ये वाला देखो, दिस दिस इज अ टर्मिनल। क्लिक ऑन दिस, click on this and then type AGY there. कोई ना भाई, ping me if you get any issues. अब ये संदीप को रन होने तक रुकना पड़ेगा शायद। You can ask on Discord संदीप, no issues. I'm ending the stream. बहुत बकचोदी कर ली, बहुत लोगों ने बोल दिया कि you are just मुंह चलाइंग here. OBS कहाँ गया मेरा? चलो guys, thank you for all joining the stream and thank you for the likes. I hope you liked what I did just here and we'll be continuing this. I guess अपने को 3-4 स्ट्रीम्स और लगेंगे। 3-4 स्ट्रीम्स में ये ख़त्म हो जाएगा OAuth, देन विल मूव टू OAuth। बट उसके बीच में हम थोड़ा लीड कोड वगैरह भी कर लेंगे क्योंकि लीड कोड से हमने चालू किया था। लीड कोड करेंगे। स्प्रिंग बूट का एक मस्त सा आइडिया आ गया मेरे को। एक और असाइनमेंट आई हुई है, वहाँ पे मेरे को कुछ UPI इंटीग्रेशन या ये सब करने के लिए लिखा हुआ था। मैंने अब तक क्वेश्चन पढ़ा नहीं। आई विल रीड द क्वेश्चन, इफ दैट इज valid for the stream I'll do it, else I'll do it by myself quickly. ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय। के गुड नाइट, आई विल ज्वाइन टुमारो। थैंक यू ब्रो। अरे यू टुक इट पर्सनली, अरे नाउ लेट्स नॉट जोक, शैल वी? नहीं नहीं, यू कैन जोक ब्रो। जोक नहीं मारोगे तो मज़ा कैसे आएगा? अगर मैं सीरियसली भी नहीं लूँगा तब भी मज़ा कैसे आएगा? आई विल डू एवरीथिंग एंड देन एट द एंड आई विल सी दिस चैनल आल्सो। अरे ये ट्रांसलेट है ना, कुछ भी करके दे रहा है। तुम्हारा मैसेज का मतलब ही कुछ और दे रहा है। सब कर लेंगे फिर एट द एंड में ये चैनल भी बेच दूंगा। सब कर लेंगे फिर एट द एंड में ये चैनल। ठीक है, गुड नाइट। सिट, तुम कहाँ से हो? टेल अस अबाउट योरसेल्फ नो। तुम पुणे से हो? कौन सी सिटी से? एटलीस्ट टेल अस दैट। आर यू इन कॉलेज? I can see many of the audience is joining from the college. There is Gaurav Singh who is like 9 years of experience. He is the senior most audience. हवा मस्त चल रही है पुणे में, मज़ा आ रहा है मेरे को तो अभी ना। एंड करने जाता हो तो ऑडियंस बढ़ती जाती है। डिस्कॉर्ड चेक।
अरे तुम्हारे पास वो नहीं है, फिर कुछ भी सेटअप ही नहीं है तुम्हारे पास। एंटी ग्रेविटी है तुम्हारे पास? मुझे लगा एंटी ग्रेविटी, अभी तो तुमने स्क्रीनशॉट भेजा ना एंटी ग्रेविटी का। ओ सॉरी, उस वो उसका था। अरे पहले तुम्हें एंटी ग्रेविटी, ब्रो। अरे अगर मेरे पास क्लॉड है तो मैं क्लॉड कोड यूज़ कर सकता हूँ, वैसे ही अगर मेरे पास एंटी ग्रेविटी है, मेरे पास एंटी ग्रेविटी सी, ये एंटी ग्रेविटी है, तुम्हें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें देता हूँ। ये गूगल का गूगल का आईडी ये है। गो टू दिस लिंक, संदीप, डाउनलोड एंटी ग्रेविटी आईडी, डू लॉगिन। Once that is done, then this AGY कमांड विल वर्क। अभी तुम्हारे सिस्टम में ये नहीं है ना, एंटी ग्रेविटी नहीं है, इसके वजह से। सबसे बढ़िया इस्तेमाल डिस्कॉर्ड का तो यही कर रहा है भाई। एंटी ग्रेविटी इज नथिंग बट एंटी ग्रेविटी AGY ब्रो। जैसे क्लॉड कोड, अभी मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्लॉड, तो ये टर्मिनल मेरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना क्लॉड में, सी। वैसे ही क्योंकि मेरे पास क्लॉड है इंस्टॉल्ड, it's another way to use the same thing in the terminal। क्लाउड कोड एपीआई तो वैसे अलग है, इसका एपीआई का पैसा अलग लगता है, तुम्हें एपीआई खरीदना पड़ता है। मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन ये है। वैसे ही फिर तुम्हारे टर्मिनल पे एजीआई ये करने से हो जाएगा। डाउनलोड दिस संदीप। सच कह रहा, हाँ मेरा स्क्रीन ही नहीं दिख रहा था, बताया था तो कोई भाई। फकिंग डायबोलिकल। भूख लगा है अब मेरे को। ठीक है भाई, ठीक है बोल के मैं करता ही जा रहा हूँ आगे। चलो गुड नाइट, आई एम एंडिंग दिस।